ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम। आती है आंधियाँ तो कर उनका खैर मकदम। तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं। ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। मेरा खुदा बड़ा है। मेरा खुदा बड़ा है। The guest got in, Dr. Sheesan? Yes, sir. Yes, sir. He'll be joining. He'll be joining now. Right. Within 1 minute. Okay, sir. Okay. Okay, sir. Yes, sir. Yeah, just Join. Right. That's what you should do. Right, sir. Right, sir. Facing some network issue, but we'll be joining with. Okay, sir. We are actually delayed. Yeah, yeah. Hetal. I hope sir has joined. Not Yeah, yet. please make Anurag sir co-host. Please immediately make Anurag sir co-host. Still, it is not appearing. No, sir. Not joined. We couldn't find, sir. Maybe No, please try CBSE secretary. Sometimes he use that. There is Secretary CBSE amongst the participants. Yes, Yeah, yes, yeah. yes, Please, sir. please. Join. That is his number. CBSE Yeah. secretary. Please Yes, sir. make him. Good Yeah, morning. sir. Sorry. Good Good morning. Good morning. morning, sir. Namaste. Namaste. Sir, namaskar. Good morning. Namaskar. Namaskar. Sir, shall we start, sir? Yes, sir. We were Please waiting start. for you. So go ahead. Go ahead. Okay. So, dear participants, hearty welcome to the anniversary edition of CEIR webinar. This is our first anniversary. So, let us start with a small silent prayer. Vande
Welcome back. Today I'll take 2 minutes of your Yes, sir. time Yes, sir. because this is our anniversary. CEIR is a Right, forum sir. of educational No problem. experts. No problem. We started our operations, our activities since 2009. We conducted a lot of webinars, conclaves across India for students, teachers, principals, included sometimes for the retired principals also. And across India, for the last 5 years, we organize principals conclave, and our journey started. And our last conclave, and I sir, for your information, was the 24th August 2019. And this was sort of the highest number of participation, or the biggest conclave we organized. And more than that, sir, you know, you were there in the venue for just 2 hours to address the principals. But the single day, that is very important, sir, a single day, to and fro, you travel from Delhi to Cochin, that, approximately 7 hours you traveled, and 1.5 hours over road travel to reach the venue. So nearly 9 hours you traveled, took the pain to address our conclave. And for a 2 hours conclave, you took a great pain. More than the numbers, what made us happy, the kind of commitment you had on us. And it was one of the biggest and the best program we had. And sir, after a few months, there was lockdown. May we decided to go online webinars. Sir, you inaugurated that also. Exactly 365 days back, sir. Then in that meeting, more than 10,000 लोग एक साथ ट्रेनिंग ले सकते। ये नई चीजें हमको मिल रही हैं कोविड, इस अपॉर्चुनिटी को हमें उठाना है, इसको आगे लेकर के चलना है। Sir, we आगे लेकर चला for I'm submitting a report to you, sir. This is an honest report. We did 3 webinar series, 15 CBSE official meeting, 64 teachers, principal webinars, 7 students career guidance programs, and 26 handwriting workshops. In that, sir, we, out of 365 days, including this webinar, it is we did 160 webinars in 365 days. Sir, for your information, in that only 2 programs were paid programs. Only 2 programs were paid program, and it was very nominal amount. CBSE charged 100, we charged 200. That's it. This is again a submission to you, sir. And sir, and I would like to bring this name here to all the participants. The senior most person among the board of directors. His timely intervention and advice made us to run. Sir, we achieved something great also in between. This is a pathway career guidance program, is a brainchild of one of our board of directors, Dr. Deepa Chandran. And we did a national quiz. This is the brainchild of one of our zonal director, Mumbai, Dr. Subhash Nair. Around 3,000 plus teachers participated. I remember we sent the questions to CBSE, your address also. And sir, in that program also, Anurag sir, you came and distributed the award.
See, you are in all our major activities, you are there, sir. Then one of our great zonal director, Madam Vijayam Karta, introduced this program in CEIR, NEP 2020 Master Series. There was 8 such series, and that also was inaugurated by you, sir. This all happened in the last 365 days. And 8 great, people, educators addressed more than 20,000 teachers, educators across India. That was also a free program. And sir, the last week, 15th of last month, we did a program with one of your subordinate, and that 17,000 people were live in YouTube and Zoom, and till date 90,000 people watched in YouTube. Sir, we did so many programs, and in India and abroad, lot of handwriting programs, pedagogy series, and dear participants, we are coming up with another series of program. Please find the chat box, you will get the link. Please register it. Tomorrow is the last date. It's an 8 series program. It's a well crafted knowledge session, training session for all educators. And there are a series of handwriting programs are coming on region wise. 12th in Pune, 13th in Delhi, 19th at Calcutta, and 27th on all over India. Again, please find the link in the chat box for registration. Sir, this was happened not only because of our board of directors. We have 48 active zonal directors across India and 7 zonal directors in the Middle East. And sir, these premium members are more than 1,500 with us. It's still open. There is no payment, nothing. Those who want to contribute education, you are welcome. Please register. Go to our website and register. And sir, I wish you to do a virtual cake cutting, because sir, one more point. Today I took little time. Usually I do a general welcome address and prayer. Sir, when we thought of an annual celebration, we never had any doubt to fix the chief guest as you, sir. No confusion was in our mind. We knew you are the only person in all our great events, whether it is face-to-face or webinars, all our big events, sir, you were there, you motivated us, and your presence, even today, I'm telling you, I'm speaking from my heart, sir, this made us proud. Nothing else to say, sir. Thank you very much. Vande Guru. Sir, with your permission, we are cutting the cake. Virtual. Thank you, sir. Thank you. Thank you, all the participants. Now I welcome Mr. Pramod Mahajan. Pramod sir will introduce Anurag sir. Pramod sir, please. Pramod sir, please, your mic. Good morning to one and all. And sir has a very limited time and he doesn't require any sort of introduction. The personality who has 1998 batch IRPS officer, joined the CBSE in 2017. He is the one who is student friendly, principal friendly, and all the stakeholder friendly. A dedicated, devoted, proactive, futuristic officer. He has the attitude of leadership, impressive, impactful, and inclusive. Under his leadership, the CBSE has changed its look, its route, and attitude. अभी CBSE, आपकी CBSE आपके दौर, हर एक सर्कुलर पेरेंट्स के पास पहुंचता है. CBSE is very, very transparent, student friendly, and effectively everything is going on. Look of the CBSE office is changed. Route of the CBSE office is changed. Route, what I mean to say, now
Everyone has an approach to the CBSE. It is an inclusive approach, quite transparent. And under your leadership, the 10 standard examinations objective criteria has been given, which is very effectively working. 12 standard decision, we understand there were various options, but the unanimous decision has been taken, and we are with you, sir. Now, after this declaration, after the decision has been taken, now what should be the next? When should be the next? And how should be the next? With that, what will be the futuristic aspect and what will be the futuristic schooling? That schooling process will make the India, will make the Bharat Vishwa Guru. With that thought of process, we welcome you for your blessing words on the first anniversary ceremony of CEIR. आपका हार्दिक स्वागत सर, और कुछ उन शब्दों के साथ हम आपको आमंत्रित कर रहे हैं कि क्या होगा भविष्य का स्कूलिंग, क्या होगा भविष्य का स्कूल। आदरणीय अनुराग त्रिपाठी जी, सेक्रेटरी CBSE, over to you, sir. Yeah, good morning to all of you, Mr. Gopinathan, Mr. Pramod Mahajan, and all participants. मैं आपका वेलकम करता हूं, and I must thanks to all of you for inviting me on this platform. सबसे पहले मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं पूरे ईयर भर डिफरेंट सेमिनार्स, वेबिनार्स, ट्रेनिंग्स, इंटरैक्टिव सेशंस, ऑनलाइन सेशंस ऑर्गेनाइज करने के लिए, क्योंकि during COVID situation, during COVID time, this was the best tool through which we can go ahead. Mr. Pramod and Mr. Gopinathan, आज मेरा एक परिचय देने के लिए और पूरे वर्ष भर जो भी एक्टिविटीज रही उसका एक ग्लिम्स देने के लिए मैं आपको थैंक्स करता हूं, क्योंकि मेमोरीज रिफ्रेश हो जाती है, ताजा हो जाती है। थैंक यू। जैसा कि हम सबको मालूम है, 10th एंड 12th एग्जाम कैंसिल कर दिए गए हैं ड्यू टू कोविड, बच्चों की हेल्थ, सेफ्टी, सिक्योरिटी को देखते हुए। एंड 10th क्राइटेरिया ऑलरेडी सर्कुलेटेड, बट 12th वी आर ऑन द जॉब, एंड विद इन 2 week टाइम वी विल सर्कुलेट द क्राइटेरिया फॉर 12th बोर्ड रिजल्ट्स। तो जस्ट वेट फॉर 2 week, counsel your students, your parents, your teacher that they do not panic, and wait for 2 weeks time. We will certainly circulate that criteria, and it will be very broader. A big platform will be there for that, and with that platform, a result will be declared in a positive and objective manner. Once again, thank you. Thanks to all. Besides the result of class 10th and 12th, हम डिस्कस करेंगे some different issues पर। सबसे पहले मैं CBSE के जो भी स्कूल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, जिन लोगों ने लास्ट 1 year में मेहनत करके, अपना हार्ड वर्क करके, ट्रेनिंग करके, ऑनलाइन क्लासेस, ब्लेंडेड अप्रोच में बच्चों तक पहुंचाई है, उसके लिए आप कांग्रेचुलेशन के पात्र हैं। आपके स्पेशली आपके टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, क्योंकि बहुत टफ टाइम है ये। स्कूलिंग नॉर्मली फेस टू फेस होती है, स्कूलिंग एक तरह का कल्चरल इवेंट है, एंड विद दिस कोविड सिचुएशन बच्चे, स्कूल और प्रिंसिपल, ये तीनों चीजें एक दूसरे को मिस कर रहे हैं। बट इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता था। जब हमारे पास आउटस्टैंडिंग नहीं हो सकता था, हमें वेरी गुड से कंप्रोमाइज करना पड़ता है। आई मस्ट से and I must thank to all your principals and teacher for that, for online schooling and for their blended approach. जैसा कि आपका टॉपिक है फ्यूचरिस्टिक स्कूल को लेकर के, CBSE स्कूल को लेकर के, CBSE स्कूल्स के साथ मोर देन 25,000 स्कूल्स हैं, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 7,000 स्कूल्स गवर्नमेंट स्कूल्स हैं एंड रेस्ट 18,000 स्कूल्स प्राइवेट स्कूल्स। एंड प्राइवेट स्कूल जितने भी हैं वो सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल पर है, मींस कि आपका अपना एक फीस स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू आप अपनी सारी प्रोग्रेस, सारी एक्टिविटीज कंडक्ट करते हैं। ड्यूरिंग कोविड टाइम वी नो कि आपके लिए भी टफ हो रहा है इन चीजों को लेकर के, क्योंकि पेरेंट्स के लिए भी है और आपके लिए भी। बट हम एक्सपेक्ट करते हैं, हम उम्मीद करते हैं कि विद इन फ्यू डेज, विद इन फ्यू मंथ, विद इन फ्यू ईयर सिचुएशन नॉर्मल होगी, पेरेंट्स और स्कूल्स दोनों वापस फ्लोरिश करेंगे जैसे पहले कर रहे थे। मिस्टर महाजन एंड मिस्टर गोपीनाथ, मैं इस सेमिनार के माध्यम से ये डिस्कशन एक बार ओपन करना चाहूंगा कि आने वाले समय में हमारे स्कूल्स किन चीजों को लेकर के आगे बढ़े।
क्या हमारी गाइडलाइंस होंगी, किस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमको और आपको भी नहीं मालूम है कि कोविड हमारे साथ कब तक रहेगा। लास्ट 1 ईयर कंप्लीट हो चुका है और नेक्स्ट ईयर भी हम लोगों को यही दिख रहा है, क्योंकि सिचुएशन पिछले वर्ष से ज्यादा खराब है। तो वी कांट से कि क्या होगा, बट मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग कोई ना कोई एक डिफरेंट मॉडल लेकर के आगे बढ़ें, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेज इस समय बेस्ट वे आउट हो सकता है। एंड अपनी ओन क्रिएटिविटी के साथ, अपने ओन इनोवेशंस के साथ स्कूल अपने डिफरेंट एफर्ट्स के साथ ऑनलाइन क्लासेस को इंटरेस्टिंग बना सकता है, उसको ब्लेंडेड अप्रोच में करके थोड़ा सा एक्सपीरियंशियल बना सकता है। क्योंकि देखिए लास्ट ईयर फर्स्ट ईयर था जहां ऑनलाइन क्लासेस को लेकर के बहुत सारे इशूज उठ रहे थे, क्योंकि टीचर्स का भी और पेरेंट्स का भी यही कहना था कि ऑनलाइन क्लासेज में इंटरेक्शन भी नहीं हो पा रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेज में लर्निंग भी प्रॉपर नहीं हो पा रही है, ऑनलाइन क्लासेज में बच्चों की प्रॉपर असेसमेंट भी नहीं हो पा रहा है, इंगेजमेंट भी नहीं हो पा रहा है। तो मेजॉरिटी ऑफ प्रिंसिपल्स एंड टीचर्स का यही कहना है कि हमारे 1000 टाइम एफर्ट्स के बाद भी ऑनलाइन क्लासेज एक तरह की फॉर्मेलिटी जैसी हो रही है, जस्ट कि वो नॉलेज गेन के लिए हो रही है। मैं अब आफ्टर 1 ईयर आप सबसे इस प्लेटफॉर्म पर मोर देन 500 प्रिंसिपल्स जुड़े हुए हैं, और जिस तरह के सेमिनार आप लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, जिस तरह के सेमिनार में वेबिनार में हम आज पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं एक तरह का मोटिवेटिव और ट्रेनिंग टाइप का सेशन होना चाहिए। मींस जब इस सेमिनार से आप बाहर निकले तो आपके हाथ में फ्यू टूल्स होने चाहिए जिसको आप अपने स्कूल में इम्प्लीमेंट कर सकें। उन टूल्स पर मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। नंबर 1, जो भी ऑनलाइन क्लासेज अब आप कंडक्ट करें, आप इस चीज को प्लान करें कि वो ऑनलाइन क्लासेज इंटरेक्टिव हों, वन वे नहीं हो, जस्ट बुकिश नॉलेज के नहीं हो, और पार्टिसिपेटिव हो। आप अपने इनोवेटिव तरीके से, अपने अपने डिफरेंट तरीके से प्लान करें कि आपकी ऑनलाइन क्लासेज 15-20 मिनट्स नॉलेज बेस्ड हो, रेस्ट 20 मिनट्स एक्टिविटीज, प्रोडक्ट, क्विज, क्वेश्चनर एंड डिफरेंट मॉडल में हो, जिससे बच्चे उसको एंजॉय कर सके। अदरवाइज ये ऑनलाइन क्लासेस भी रूट लर्निंग की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो दिस इज द फर्स्ट रिक्वेस्ट कि प्लीज अपनी ऑनलाइन क्लासेस को आप इंटरेक्टिव करने के लिए, पार्टिसिपेटिव बनाने के लिए आप अपने टीचर्स को ट्रेंड करें, नए प्लेटफॉर्म को आप यूज करें, नई नई टेक्नोलॉजी आप इन्वॉल्व करें, जिससे आपकी ये ऑनलाइन क्लासेज रोट लर्निंग की जगह एक्सपीरियंशियल हो सके। थोड़ा सा टफ होगा, मुश्किल होगा, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आपको ये प्लान करना होगा और आप इसको कर सकते हैं। नंबर 2, ऑनलाइन क्लासेज में सिर्फ आप सब्जेक्ट नॉलेज ही नहीं दें, ऑनलाइन क्लासेज में आप प्रैक्टिकल्स पर भी बहुत ज्यादा एम्फेसिस दें, क्योंकि प्रोजेक्ट्स, एक्टिविटीज, प्रैक्टिकल्स, ये चीजें ऑनलाइन क्लासेज को इंटरेक्टिव बनाएंगी, पार्टिसिपेटिव बनाएंगी, एक्सपीरियंशियल बनाएंगे और लर्निंग बाय डूइंग की तरफ जाएंगी। तो ड्यूरिंग लास्ट 1 ईयर प्रैक्टिकल एग्जाम ऑलमोस्ट आप लोग नहीं ले पाए हैं, बट अब आप ये मान के चलें कि आने वाले समय में ऑनलाइन क्लासेस लंबा चलेंगी, अब आपको नए प्लेटफॉर्म तलाशने पड़ेंगे। एंड बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिकल के सिमुलेशंस के लैब्स हैं जहां बच्चे इस कार्य को कर सकते हैं। और मैं फिर कनेक्ट करना चाहूंगा कि ये प्रैक्टिकल एग्जाम सिर्फ आप ऑनलाइन लैब में ही नहीं कराएं, आप अपने बच्चे को काउंसिल करें, गाइड करें और ट्रेंड करें कि इस तरह के फ्यू प्रैक्टिकल्स वो अपने घर में कर सके, क्योंकि फिजिक्स के, बायो के, केमिस्ट्री के, इवन ज्योग्राफी के, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के, मैथ के जो प्रैक्टिकल्स हो सकते हैं, उसमें ऑलमोस्ट 50 to 75% चीजें हमारी डेली रूटीन लाइफ से जुड़ी होती हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो डेंजरस ना हो, जो बच्चों के लिए किसी तरह का नुकसान ना हो, ऐसे कुछ उपाय प्रैक्टिकल्स के लिए अब आप घर में स्टार्ट कराएं और आपके टीचर ऑनलाइन उसको मॉनिटर करें कि ऐसे प्रैक्टिकल्स, ऐसे प्रोजेक्ट्स और एक्टिविटीज बच्चे लर्निंग बाय डूइंग के थ्रू घर में कर रहे हैं। तो सेकंड रिक्वेस्ट मेरी आपसे यह है कि इस ब्लेंडेड अप्रोच में, ऑनलाइन अप्रोच में प्रोजेक्ट्स और एक्टिविटीज एंड आप अपने प्रैक्टिकल्स पर मैक्सिमम एम्फेसिस दें, क्योंकि ये आपकी रूटीन लर्निंग को एक्सपीरियंशियल ले जाएंगी। और उसके लिए हम छोटे छोटे स्टेप्स आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप अपने क्रिएटिव तरीके से, इनोवेटिव, क्योंकि हर स्कूल के पास डिफरेंट रिसोर्स होता है और स्कूल इसको नए सिरे से कर सकता है। आई होप कि आप लोगों ने लास्ट ईयर भी किया होगा, लेकिन बहुत सिस्टमिक वे में नहीं हो पाया,
क्योंकि हम सब वेट कर रहे थे कि कुछ दिनों में हमारे स्कूल खुल जाएंगे। अब आप मान के चलें कि स्कूल लंबे समय तक शायद आपको बंद रखना पड़े, तो प्लीज डू नॉट वेट, इमीडिएटली 100% एफिशिएंसी के साथ आप स्टार्ट करें अपने प्रैक्टिकल्स, प्रोजेक्ट्स और एक्टिविटीज को। तीसरी रिक्वेस्ट आप प्रिंसिपल से है, आपके टीचर से जो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कि अभी तक क्या होता रहा है कि जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आप बच्चों को देते रहे इन ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, चाहे ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट हो, चाहे कॉमर्स के सब्जेक्ट हो या साइंस के, आपके जो प्रोजेक्ट्स रहे हैं वो फॉर्मेलिटी रहे हैं। मैं बहुत सत्यता के साथ ये कह रहा हूँ कि व्हाट एवर प्रोजेक्ट्स आप बच्चों को देते हैं वो एक तरह के बच्चों को उस एक्टिविटी को पूरा करने का होता है। तो बच्चे अपने घर में फाइल प्रिपेयर करते हैं, कट पेस्ट करते हैं, इंटरनेट से सर्च करते हैं और एक खूबसूरत कलरफुल फाइल आपको सबमिट कर देते हैं। लेकिन आप सबको मालूम है कि आपके यही बच्चे जब फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं तो किस तरह से एस्से लिखने की प्रोसेस होती है, किस तरह से पर्सनल प्रोफाइल होता है, कैसे उनकी सोशल, इन्वायरमेंटल एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होती है जो पार्टिसिपेट करती हैं। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा ये तीसरी, कि जो प्रोजेक्ट्स आप अपने बच्चों को दे रहे हैं वो प्रोजेक्ट्स फॉर्मेलिटी के रूप में, कट पेस्ट के रूप में या इंटरनेट से निकाल करके प्रिंट आउट लेकर के कलरफुल फाइल बनाने के लिए नहीं होना चाहिए। आपको नए तरीके अब अपनाने पड़ेंगे। नेक्स्ट 1 ईयर जब भी आप अपने बच्चों को प्रोजेक्ट दें, बहुत ही वो उनकी प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड हो। नंबर 1 वो प्रोजेक्ट्स उनकी प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड हो। नंबर 2 वो प्रोजेक्ट्स कहीं ना कहीं उनको रिसर्च ओरिएंटेड करें, इनोवेटिव और क्रिएटिव बनाए। नंबर 3 वो प्रोजेक्ट्स वो अपने घर के आसपास से रिलेट कर सके, उसको आगे बढ़ा सके, कुछ ना कुछ नया कर सकें। नंबर 4 उन प्रोजेक्ट्स का आप ऑब्जेक्टिविटी के साथ असेस कर सकें। प्रोजेक्ट्स इतने क्रिएटिव तरीके से दीजिए कि बच्चा जब तक दिमाग नहीं लगाए, उसमें एक्सपीरियंशियल ना हो, लर्निंग बाय डूइंग मेथड नहीं अपनाए, तब तक वो प्रोजेक्ट में आगे नहीं बढ़ पाए। तो धीरे धीरे बच्चों की हैबिट बढ़ेगी। ये मान के चलें कि शॉर्टकट बच्चों के पास होता है, तो कट पेस्ट करके आपको रात में बना करके अगले दिन फाइल दे देते हैं। आप नए मॉडल्स, नए क्रिएटिव तरीके से लेके चले, क्योंकि आने वाले समय में प्रोजेक्ट बेस्ड असेसमेंट एक इंपॉर्टेंट असेसमेंट होगा। एंड मेजॉरिटी ऑफ द फॉरेन कंट्रीज जहां लर्निंग इवॉल्व हो गई, जहां रोट लर्निंग एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे शिफ्ट हो गई, वहां प्रोजेक्ट असेसमेंट पर बहुत ज्यादा थ्रस्ट दिया जाता है। ईच एंड एवरी स्टूडेंट को सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज लिबर्टी होती है प्रोजेक्ट्स करने की। उन प्रोजेक्ट्स को बच्चा सबमिट करता है। वो प्रोजेक्ट सिर्फ स्कूल के टीचर ही नहीं चेक करते, वो क्रॉस चेकिंग होती है। उस प्रोजेक्ट को दूसरी यूनिवर्सिटी और कॉलेज में भी चेक किया जाता है। एंड फाइनली एक फेयर लगता है जहां वो प्रोजेक्ट्स पर बच्चा प्रेजेंटेशन देता है एंड डिफरेंट यूनिवर्सिटी, कॉलेज के लोग आकर के उसको देखते हैं और जज करते हैं। ये डिफरेंट टाइप की एक्टिविटी है जिसमें फॉर्मेलिटी कम से कम होती। अभी हमारे सीबीएसई में जो प्रोफाइल आप तैयार कराते हैं, जो प्रोजेक्ट्स आप देते हैं, उन प्रोजेक्ट्स को एक फॉर्मेलिटी की तरह बच्चे लेते हैं और स्कूल में जमा कर देते हैं। नॉर्मली उस प्रोजेक्ट पर स्कूल में प्रेजेंटेशन भी नहीं होता। मैं ये डिस्कशन आपसे इसलिए कर रहा हूं कि एक इम्पॉर्टेंट टूल है प्रोजेक्ट्स। आप अपने बच्चे को चैप्टर और टॉपिक वाइज 4 to 5 प्रोजेक्ट्स हैंडओवर करें, बच्चों को लिबर्टी दें उनमें से कुछ भी सेलेक्ट करने के लिए, उसको गाइड करें, ट्रेंड करें, मोटिवेट करें कि वो प्रोजेक्ट इनोवेटिव और क्रिएटिव हो, बिल्कुल डिफरेंट हो। उस प्रोजेक्ट पर बच्चे का प्रेजेंटेशन लें। प्लीज फाइल जमा नहीं कराएं। प्लीज जो भी बच्चा 10 पेज 20 पेज का प्रोजेक्ट बनाया है उस पर आप प्रेजेंटेशन दें। प्रेजेंटेशन मींस ऑनलाइन वो बच्चा प्रेजेंट करेगा, प्रिपरेशन के बारे में डिस्कस करेगा, उसने प्रोजेक्ट्स को बनाया कैसे, ये यूनिक क्यों है, ये क्रिएटिव क्यों है, इसमें कोई नया रिसर्च इनोवेशन क्या है, इसका फ्यूचर बेनिफिट क्या है, रूटीन लाइफ से कनेक्टेड कैसे, लाइफ की प्रॉब्लम्स को ये रिड्रेस कैसे कर सकता है, क्यों उसका प्रोजेक्ट इनोवेटिव क्रिएटिव तरीके से यूनिक है, इन पर डिटेल डिस्कशन होना चाहिए। तो प्लीज ये तीसरी मेरी सिफारिश और रिक्वेस्ट है कि आप प्रिंसिपल जब आज इस सेमिनार को अटेंड कर रहे हैं तो आप इस चीज को एक बार मनन करके देखें कि जो भी प्रोजेक्ट्स अब आप अपने बच्चों को देंगे वो असेसमेंट का एक बड़ा टूल होगा, फॉर्मेलिटी नहीं होगी, और बच्चे उसको प्रेजेंट करें ऑनलाइन और ईच एंड एवरी स्टूडेंट उस प्रोजेक्ट्स को देखे, करेक्ट करे, टीचर करेक्ट करे एंड फिर बच्चे फाइनली सबमिट करें। नेक्स्ट आपके टीचर भी असेस करे और अपने किसी कलीग दूसरे स्कूल में क्रॉस चेक कराइए। आपके उस बच्चे का प्रोजेक्ट ऑनलाइन मोड में भेज दीजिए। 4 to 5 स्कूल लाइक सहोदया, लाइक आप जो भी बेस्ट स्कूल्स हैं वो क्रॉस एंट्री कराएं।
तो आपके बच्चे का प्रोजेक्ट दूसरा स्कूल भी असेस करेगा, आपका स्कूल भी असेस करेगा, एंड फाइनली बच्चा जो है एक क्रिएटिव तरीके से सामने आएगा। ये मेरी तीसरी सिफारिश है। पहली मैंने ऑनलाइन स्कूलिंग पर बात की, ब्लेंडेड अप्रोच पर, उसको इनोवेटिव क्रिएटिव तरीके से डिफरेंट करें। 15-20 मिनट से ज्यादा क्लास नहीं हो, नेक्स्ट 20 मिनट में आप डिफरेंट पार्टिसिपेटिव मेथड अपनाएं, फ्लिप तकनीक लेकर के आए, एक्सपीरियंशियल तकनीक लेके आए, जिससे क्लासेज आपकी इंटरेस्टिंग हो, लर्निंग बाय डूइंग पर हो और बच्चे जॉयफुल तरीके से सीख सकें। नहीं तो रोट लर्निंग के अलावा कुछ नहीं होगा। स्किलिंग और कॉम्पिटेंसी तभी होगी जब आपकी ऑनलाइन क्लासेस पार्टिसिपेटिव होंगी, रिफ्लेक्टिव होंगी। दूसरी रिक्वेस्ट मैंने आपसे प्रैक्टिकल्स के लिए की कि आप अपने प्रैक्टिकल्स को फ्रूटफुल कैसे बनाएं। अभी तक फॉर्मेलिटी में नहीं रहें, बच्चे घर में, घर के बाहर, ओ लैब में आपके टीचर से गाइडलाइन लेते हुए कुछ नया प्रयोग करें। ऐसा क्यों होता है कि जो प्रैक्टिकल किताब में दिए हुए सिर्फ आप वही रिजल्ट उनको बताते हो, तो ऑलरेडी हो चुका है। हमारे 10th और 12th में जितने प्रैक्टिकल्स आपकी बुक में हैं, जाहिर साइंटिस्ट ऑलरेडी उसको प्रूव कर चुके हैं। आप सिर्फ उनको मिक्स करते हैं, ऐड करते हैं, कट पेस्ट करते हैं और बच्चों को बताते हैं कि इस तरीके से ये होता है। आई एम सेइंग कि जब वो बच्चा 3, 4, 5 प्रैक्टिकल्स कर सके तो नेक्स्ट 6 प्रैक्टिकल यूनिक क्यों ना बनाए हो, एक नया आविष्कार क्यों नहीं करे। आपकी टीचर जब पोएम लिखाती है तो उसका टेक्निक होनी चाहिए, बच्चा एक नई पोएम लिख दे, एक नई स्टोरी लिख दे, एक नया प्रैक्टिकल दे दे, एक नया मैथ का फॉर्मूला दे दे, एक नई साइंस की टेक्निक बता दे। टारगेट ये होना चाहिए कि नॉलेज क्रिएटिविटी तक कैसे पहुंचे। तो नॉलेज का एंड होना चाहिए क्रिएटिविटी पर, इनोवेशन पर, और उसका यही तरीका है। तो प्लीज ऑनलाइन क्लासेस को आप पार्टिसिपेटिव करें और उसके लिए आप तरीके ढूंढिए, हजारों तरीके ढूंढिए, आपस में डिस्कस करिए, अपने टीचर से डिस्कस करिए, वेबिनार सेमिनार करिए। इस तरह के सेमिनार में जो हम डिस्कस करें यहां से रिजल्ट लीजिए और एक्सपेरिमेंट करिए अपने स्कूल में। पुरानी स्कूलिंग धीरे धीरे खत्म होगी, क्योंकि पूरी की पूरी पुरानी स्कूलिंग जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम पर है वो रोट लर्निंग पर, मगिंग पर बेस्ड है। वो कहीं भी इनोवेटिव, क्रिएटिव, रिसर्च ओरिएंटेड नहीं हो पाती, पार्टिसिपेटिव नहीं हो पाती। बच्चे कभी भी उसको प्रैक्टिकल लाइफ से नहीं जोड़ पाते, बच्चे कभी भी स्किलिंग और कॉम्पिटेंसी डेवलप नहीं कर पाते। 100 में 100 लेने के बाद भी उनके अंदर क्षमता नहीं होती कि सोसाइटी में सरवाइव कर सकें, जंप ले सकें, कम्युनिकेट कर सकें। अब ये बदलने का समय है और कोरोना एक अपॉर्चुनिटी के रूप में आया है आप लैटरल थिंकिंग के लिए। आप अपनी ऑनलाइन क्लासेस को, प्रैक्टिकल्स को, एंड तीसरा डिस्कशन मैंने प्रोजेक्ट्स को लेकर के किया कि प्रोजेक्ट बेस्ड असेसमेंट वन ऑफ द बेस्ट असेसमेंट हो सकता है और आप इसको स्टार्ट करें। हम लोग भी इसको कहीं ना कहीं इन्वॉल्व करेंगे, इवॉल्व करेंगे। आपके पास 20% इंटरनल असेसमेंट एंड बच्चों के 30% प्रैक्टिकल में यही देखना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हम नंबर्स की रेस में आ गए हैं और हम इन चीजों को अवॉइड करते हैं। हम अच्छे पढ़े लिखे लर्नड प्रिंसिपल भी अवॉइड करते हैं और रूटीन स्टडी पर चले जाते हैं। तो ये तीसरा निवेदन है कि अपने प्रैक्टिकल्स को थोड़ा सा डिफरेंट करिए, प्रोजेक्ट्स को पार्टिसिपेटिव बनाइए और दूसरे स्कूलों से क्रॉस चेक कराइए। मैं चौथी रिक्वेस्ट आपसे करने जा रहा हूं, फोर्थ, जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल होगा इस आने वाले वर्ष में, दैट इज सेल्फ स्टडी। ऐसा क्यों है कि हमारा टीचर ही बच्चे को पढ़ाए? सबसे अच्छी टीचर वो होती है जो बच्चों को क्यूरियस करती है पढ़ने के लिए। सबसे अच्छा प्रिंसिपल वो होता है जो बच्चे के अंदर इंक्यूजिटिवनेस ला देता है पढ़ने के लिए, कि आपके टीचर उनको इग्नाइट करे, क्वेश्चंस दे एंड सेल्फ स्टडी के लिए मोटिवेट करे। तो ये एक नया टूल आपको अपनाना ही होगा, सब कुछ आपके टीचर नहीं पढ़ा सकते। कारण क्या होता है कि जब बच्चा आईआईटी की तैयारी करता है तो खुद पढ़ता है, मेडिकल की तैयारी करता है खुद पढ़ता है, यूपीएससी की प्रिपरेशन करता है सेल्फ स्टडी करता है, इंटरव्यू की प्रिपरेशन करता है सेल्फ स्टडी करता है। ओनली 10th 12th में हमारे बच्चे टीचर बेस्ड हो जाते, लगता है कि हम स्कूल में जाएंगे, रटेंगे, स्कूल से नहीं मिलेगा ट्यूशन करेंगे और कोचिंग करेंगे। तो प्लीज फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज आप इस चीज को जरूर ध्यान दें आने वाले इस समय में कि सेल्फ स्टडी में इनोवेटिव तरीका अपनाएं और बच्चों को मॉनिटर भी करें, मोटिवेट भी करें। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। आपकी टीचर बच्चे को चैप्टर पढ़ने के लिए बोले और क्विज करे, और अब सपोज करिए कि अगर बच्चे नहीं पढ़े हैं तो रीडिंग उस क्लास में ऑनलाइन हो, क्योंकि जब सेल्फ स्टडी की हैबिट पड़ेगी तो बच्चे नई चीजें ढूंढेंगे और सर्च करेंगे और नए नए प्रश्न निकालेंगे, नए नए उत्तर निकालेंगे। आपकी टीचर पढ़ाए, आपकी टीचर आंसर करे, इससे बेटर है बच्चा पढ़े और बच्चा फिर नए आंसर का जवाब दे।
तो दिस विल बी द फोर्थ टूल सेल्फ स्टडी को लेकर कि घर में रह करके बच्चे किताबें खुद कैसे पढ़ें। ये चैलेंज अपने टीचर को दीजिए कि जो टीचर मिनिमम पढ़ाए और मैक्सिमम बच्चे पढ़ करके आउटपुट दें, उसको अवार्ड दीजिए, उसको मोटिवेट करिए, उसको ट्रेनिंग दीजिए, उसको इंस्पायर करिए, क्योंकि ये बड़ा टूल होगा सेल्फ स्टडी का। कैसे करेंगे, क्या तरीके अपनाएंगे, आप सारे लर्नड लोग हैं, सीनियर लोग हैं, और आप इन सारी चीजों को कर सकेंगे। पांचवी रिक्वेस्ट मैं आपसे कर रहा हूं, फिफ्थ एंड इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट। मैं फर्स्ट 4 डिस्कस कर चुका हूं, ऑनलाइन क्लासेस को, प्रैक्टिकल को, प्रोजेक्ट्स को एंड सेल्फ स्टडी को। फिफ्थ इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप अपने पेरेंट्स को इन्वॉल्व करें। अभी तक इंडियन एजुकेशन सिस्टम में पेरेंट्स को लगता है कि उनका काम है बच्चों को स्कूल पहुंचाना, और स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है नॉलेज देना, स्कूल की जिम्मेदारी है बच्चों को पढ़ाना, रटाना और एग्जाम और कंपटीशन में क्रैक कराना। पार्टिसिपेट अब पेरेंट्स को करना पड़ेगा। आप टीचर के रूप में, ऑब्जर्वर के रूप में पेरेंट्स होंगे, क्योंकि बच्चे इमेच्योर हैं। बच्चों से आप उम्मीद नहीं कर सकते कि सेल्फ स्टडी कर लेंगे, रिसर्च ओरिएंटेशन कर लेंगे, उनको सपोर्ट की जरूरत है। तो आपका पेरेंट उनको मोटिवेट करेगा, सपोर्ट करेगा, सुपरवाइज करेगा, गाइड करेगा। तो पेरेंट्स की भूमिका तय करिए। आप ईच एंड एवरी पेरेंट से क्लास वाइज डिस्कशन करिए, एक टूल अपने अकॉर्डिंग डेवलप करिए कि पेरेंट का रोल घर में क्या होगा। और हो सकता है कि आपके पेरेंट्स अगर वर्किंग हो तो क्लासेज आप मॉर्निंग और इवनिंग में शिफ्ट कर लीजिए। जरूरी नहीं कि क्लासेस ड्यूरिंग स्कूल आवर ही हो, जिस समय पेरेंट अवेलेबल हो कस्टमाइज कर लीजिए, आपके लिए बेटर होगा, टीचर के लिए। इट मे बी क्लासेज इवनिंग में स्टार्ट हो, इट मे बी मॉर्निंग में स्टार्ट हो। तो प्लीज पेरेंट्स को इन्वॉल्व करिए। उसके 2 बेनिफिट होंगे। एक तो जो भी आप लर्निंग देना चाहते हैं, जो प्रोजेक्ट्स कराना चाहते हैं, जो एक्टिविटी कराना चाहते हैं, जो लैब्स में आप प्रैक्टिकल कराना चाहते हैं, पेरेंट्स सपोर्ट करेगा तो बच्चा मोटिवेट होकर के उस कार्य को करेगा। दूसरा, पेरेंट्स सुपरवाइज करेगा। अगर बच्चा नहीं करना चाहता है तो पेरेंट्स गाइड करेगा, फोर्स भी करेगा, रिक्वेस्ट भी करेगा, इंस्पायर भी करेगा। तो दूसरा बेनिफिट होगा पेरेंट्स का। एंड तीसरा, अल्टीमेटली पेरेंट्स का ही रिफ्लेक्शन उनके बच्चे होते हैं। तो एथिकल डेवलपमेंट, वैल्यू बेस्ड डेवलपमेंट, एटीट्यूड एंड बिहेवियर, ये सारी चीजें पेरेंट्स से डेवलप होती हैं। तो जब आप पेरेंट की काउंसलिंग करेंगे, पेरेंट्स को मोटिवेट करेंगे, पेरेंटिंग को लेकर ट्रेंड करेंगे, तो बच्चों का जो इमोशनल डेवलपमेंट है, बच्चों का जो अफेक्टिव डोमेन का डेवलपमेंट है, वो चीजें बहुत अच्छे तरीके से डेवलप होंगी। ये रिक्वेस्ट मैं आपसे 5वीं कर रहा हूं कि पेरेंट्स को अब नीड है, अर्जेंट नीड है अपने सेटअप में इन्वॉल्व करने की। ईच एंड एवरी स्टेप पर लेट पेरेंट को पता हो कि उसका बच्चा क्या पढ़ रहा है, क्या नहीं पढ़ रहा है, क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है, उसका बिहेवियर, उसका एटीट्यूड, उसकी कम्युनिकेशन स्किल, उसकी कॉम्पिटेंसी, उसके पढ़ने का तरीका, उसकी हैबिट, ईच एंड एवरीथिंग। तो प्लीज नए आने वाले समय में 5वां टूल अपनाएं, पेरेंट्स को आप इन्वॉल्व करें, डिटेल इन्वॉल्व करें। एंड 6th एंड लास्ट थिंग, आप असेसमेंट कैसे करेंगे। आप पूरे वर्ष भर पढ़ाएंगे तो असेस कैसे करेंगे। असेसमेंट के नए नए टूल अब आप इवॉल्व करें। आपके यूनिट टेस्ट, आपके मिड टर्म, आपके प्री बोर्ड सिर्फ पेन पेपर पैटर्न पर नहीं होने चाहिए। टेक्नोलॉजी ने आपको बहुत सारी चीजें दी हैं, क्योंकि पेन पेपर टेक्निक रोट लर्निंग को बढ़ावा देती है, लेकिन अदर जो असेसमेंट के तरीके हैं वो आपकी पार्टिसिपेटिव लर्निंग होती है। तो बच्चे को 360 डिग्री रिव्यू करने के लिए, उसकी पर्सनालिटी को ग्रूम करने के लिए, उसकी कॉम्पिटेंसी को डेवलप करने के लिए, उसकी स्किलिंग करने के लिए आपको रोट लर्निंग वाले असेसमेंट से शिफ्ट करना पड़ेगा। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको कोविड ने दी है कि अब आप सिर्फ एक टेस्ट पर भरोसा नहीं करिए। और सीसीई को लेकर के आपका एक बड़ा अनुभव रहा है। सीसीई के फेल होने के डिफरेंट रीजन हो सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारी अच्छी चीजें भी रही हैं। तो आप सीसीई की अच्छी चीजों को इवॉल्व करिए। तो 5th, 6th एंड लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग, 360 डिग्री असेसमेंट को लेकर के अब आपको नई नई टेक्निक्स इवॉल्व करनी है। उस असेसमेंट में आप नॉलेज बेस्ड असेसमेंट को आप प्री, मिड टर्म, यूनिट टेस्ट इसमें ले सकते हैं, जहां आप पेन पेपर के टेस्ट ले सकते हैं। नेक्स्ट, उसकी स्किल डेवलपमेंट करने के लिए आप एक्टिविटीज और प्रोजेक्ट पर जाएं, जिससे बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल डेवलप हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग डेवलप हो, क्रिएटिविटी की स्किल डेवलप हो, कम्युनिकेटिव हो, कोलैबोरेटिव हो, टीम में आए,
लीडरशिप डेवलप हो बच्चे की, फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप हो बच्चे की, इनिशिएटिव लेने की कला बच्चे की डेवलप हो, बच्चों में प्रोडक्टिविटी आए, उसकी सोशल स्किल आए। ये चर्चाएं हम रोज करते हैं, हम लोग बहुत सीनियर लोग हैं, हम लोग प्रिंसिपल्स 20, 30, 40 ईयर के एक्सपीरियंस्ड हैं, हमें सब मालूम है लेकिन हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। हमें सब मालूम है लेकिन हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, क्योंकि हम विल पावर नहीं है, क्योंकि हम पैशनेट नहीं होते हैं, क्योंकि हम करते नहीं है। हमें जब पता है कि आपके 100 में 100 लेने से बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, अगर उसमें स्किल्स और कॉम्पिटेंसीज नहीं होगी, तो हम क्यों नहीं स्किल और कॉम्पिटेंसी पर सेंट्रलाइज करते अपने को। हम सारे डिस्कशन तो करते हैं, अल्टीमेटली आकर के रोट लर्निंग की पढ़ाई शुरू कर देते हैं। तो ये नया अपॉर्चुनिटी कोविड ने आपको दी है कि आप असेसमेंट में ध्यान रखें, उसकी स्किल का असेसमेंट कैसे हो रहा है, उसकी कॉम्पिटेंसी का असेसमेंट कैसे हो रहा है, और उसका तरीका मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। OECD ने या जो भी आपके पास 21st सेंचुरी स्किल्स हैं उसको हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। एक लाइफ स्किल्स है और एक लर्निंग स्किल्स है और एक इंफॉर्मेशन मीडिया एंड टेक्नोलॉजी है। लाइफ स्किल्स आपको मालूम है कि लाइफ स्किल्स आपके पास प्रोडक्टिविटी की स्किल, कि बच्चा प्रोड्यूस कर सके, क्रिएट कर सके, नई चीजें बना सके, 2+2 को जोड़ करके 10 to 20 तक पहुंच सके, दिस इज द प्रोडक्टिव स्किल। देन बच्चे के पास जो होनी चाहिए लीडरशिप, लीडरशिप ऐसी है कि लीड कर सके, अपनी टीम को लीड करे, अपने स्कूल को लीड करे, अपनी सोसाइटी को लीड करे, अपनी हेल्थ को लीड करे, अपने थॉट्स को लीड करे, अपनी पर्सनालिटी को लीड करे, अपने कंट्री को लीड करे, अपनी कंपनी को लीड करे। क्योंकि लीडरशिप एक ऐसी स्किल है जो 1000 लोगों की स्ट्रेंथ को लेकर के आपको 1000 गुना बड़ा काम दे देती है। ये भी लाइफ स्किल है, प्रोडक्टिविटी लाइफ स्किल है। फ्लेक्सिबिलिटी, बच्चा फ्लेक्सिबल है कि नहीं, दूसरों के थॉट्स को अडॉप्ट करता है, दूसरों की विचारों को भी सुनता है। क्योंकि अगर बच्चा फ्लेक्सिबल नहीं होगा तो फिर सोसाइटी में सस्टेन करना बहुत मुश्किल होगा। ये एक इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल है। इनिशिएटिव लेना, अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेता है कि नहीं। कई बार क्लास में क्या होता है कि क्लासरूम का एटमॉस्फेयर बच्चे को डंप कर देता है, बच्चे इनिशिएटिव नहीं लेते, साइलेंट हो जाते हैं, आइसोलेटेड हो जाते हैं। आपके टीचर को बच्चे को प्रमोट करना है इनिशिएटिव लेने के लिए, और इनिशिएटिव लेने के छोटे छोटे तरीके हो सकते हैं। आपको मालूम है, आप जो भी स्कूल में, जस्ट लाइक एक तरीका, आप अपने किसी ऐसे बच्चे को जो इनिशिएटिव नहीं ले सकता, उसको 2 मिनट के लिए कह सकते हैं कि ये पैराग्राफ तुम्हें पढ़ना है, इसका आंसर तुम्हें निकालना है, इस टीम को तुम्हें लीड करना है, ये एक्सपेरिमेंट तुम्हें करके दिखाना है, बच्चा डेवलप कर देगा। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट लाइफ स्किल्स जिसको आपको प्रोजेक्ट के थ्रू, एक्टिविटी के थ्रू, ऑनलाइन लैब्स के थ्रू, ऑनलाइन म्यूजियम्स के थ्रू, सेल्फ स्टडी के थ्रू, होम लर्निंग के थ्रू, मोटिवेशन के थ्रू, इंस्पिरेशन के थ्रू, लेक्चर्स के थ्रू, वीडियोज के थ्रू, स्टोरी के थ्रू, स्टोरी टेलिंग के साथ साथ ड्रामेटिक्स के थ्रू आप डेवलप कर सकते हैं। ये लाइफ स्किल जीवन में ज्यादा जरूरी है। आज हमारे सामने इतने सारे प्रिंसिपल्स हैं, आप में अगर कम्युनिकेशन स्किल नहीं होती तो आज आप प्रिंसिपल बनते, आप में लीडरशिप नहीं होती तो आप अपने स्कूल को लीड करते, इनिशिएटिव लेने की कला नहीं होती तो आप नए नए काम कर पाते, फ्लेक्सिबल आप नहीं होते तो 10 लोगों को जोड़ पाते, नहीं जोड़ सकते थे। आप दूसरों के सुनते और दूसरों को सुनाते भी हैं। आपके पास अगर सोशल स्किल्स नहीं होती तो क्या आज ये प्लेटफॉर्म आप डेवलप कर पाते। तो जैसे प्रिंसिपल बनने के लिए आपको नंबर की जरूरत नहीं थी, आप अपनी मार्कशीट को बहुत सारे 40-50% पे होंगे, लेकिन लाइफ में बेस्ट अचीव कर रहे हैं। अमिताभ बच्चन या धीरू भाई अंबानी या एपीजे कलाम में टॉपर नहीं रहे हैं, लेकिन लीडर्स रहे हैं, इनोवेटर्स रहे हैं, क्रिएटर्स रहे हैं, कम्युनिकेटर्स रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्वर्स रहे हैं, इसलिए दुनिया में टॉप तक जाते हैं। तो इसलिए लाइफ स्किल आपकी ऑनलाइन क्लासेज में, ऑनलाइन लैब में, ऑनलाइन प्रोजेक्ट में, इवन असेसमेंट में हो रही कि नहीं, आपको ध्यान रखना है। सिमिलरली आपके पास लर्निंग स्किल्स हैं, और इंपॉर्टेंट लर्निंग स्किल जिसको आपको 21st सेंचुरी स्कूल में कहा गया, व्हाट आर द 4 इंपॉर्टेंट स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल, कोलैबोरेटिव मींस टीम की स्किल जो आपके पास है, क्रिएटिविटी की स्किल, एंड क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग मींस 4 इंपॉर्टेंट आपके पास लर्निंग स्किल्स हैं। आपका बच्चा प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहा है, कोविड का समय आया, कोविड से बचने के लिए नया सोल्यूशन दिया उसने, कोई प्रॉब्लम आ रही है उसको सॉल्व कर पा रहा है, क्रिएटिव तरीके से सोल्यूशन दे पा रहा है, टीम को जोड़ करके एक नया अचीवमेंट ले पा रहा है, और अपनी बात को कह पा रहा है। उसको लिखना आता है, उसको पढ़ना आता है, उसको बोलना आता है या नहीं,
वो अच्छा लिसनर, अच्छा राइटर, अच्छा डिबेटर, अच्छा कम्युनिकेटर है कि नहीं? ये इम्पोर्टेंट चीज है जो बच्चों को करना ही है। अनफॉर्चुनेटली हमारे एजुकेशन सेटअप में हमने इसको कभी ध्यान नहीं दिया। हमने 100 पर 100 मार्क्स तो लेना चाहा, लेकिन इन चीजों को एकदम से छोड़ दिया। बाई प्रोडक्ट के रूप में कुछ लोग इनको प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स पीछे रह जाते हैं, नहीं कर पाते हैं। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं, प्रमोद जी, गोपीनाथ जी एंड जितने भी मोर देन 500 प्रिंसिपल्स हैं, प्लीज असेसमेंट के टूल में ध्यान रखें कि आपका असेसमेंट सिर्फ रोट लर्निंग का असेसमेंट नहीं हो। आपका असेसमेंट सिर्फ 100 में 100 देने वाला पेन पेपर का असेसमेंट नहीं हो। आप अपने असेसमेंट में डिफरेंट पैराडाइम लेकर के आइए, उसकी कम्युनिकेशन स्किल को असेस करिए, लीडरशिप को असेस करिए, इनोवेटिवनेस को असेस करिए, और इसके लिए आपको एटमॉस्फेयर देना पड़ेगा, प्लेटफॉर्म देना पड़ेगा। और वो प्लेटफॉर्म वही होगा जो मैं लास्ट 20 मिनट से डिस्कस कर रहा हूँ। प्रोजेक्ट्स हुए, एक्टिविटीज हुई, पार्टिसिपेटिव चीजें हुई, पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट हुआ, सेल्फ स्टडी हुई, क्वेश्चनायर हुई, क्विजेज हुई। आप इतना बड़ा सेमिनार आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, लेट छोटे छोटे बच्चों को जिम्मेदारी दीजिए, बच्चे को अपने सब्जेक्ट वाइज वेबिनार ऑर्गेनाइज कराने की जिम्मेदारी दीजिए। आपका बच्चा कोई सोशल साइंस का, कोई ज्योग्राफी का, कोई हिस्ट्री का, कोई मैथ का, कोई एथिक्स का, कोई रिलीजन का, कोई वैल्यूज का, कोई स्टोरीज का, कोई नाटकों का, इवन डिफरेंट 1000 तरीके हैं। आप अपने हर बच्चे को रेस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए, उसको एक वेबिनार ऑर्गेनाइज करना है, उस वेबिनार में बच्चे पार्टिसिपेट करें और उस वेबिनार में एक्सपर्ट पार्टिसिपेट करें। आप दीजिए काम, वो छोड़ दीजिए, प्लेटफॉर्म बनाएगा, वो इनवाइट भेजेगा, वो कम्युनिकेट, और द मोमेंट उसको आपने एक्टिविटी करने के लिए दिया, लाइक कि आज का वेबिनार जिसने भी कोऑर्डिनेट किया हो, ये सारी स्किल होगी तभी सक्सेसफुली कर पा रहा है। अगर इसको प्रमोद जी ने किया या गोपीनाथ ने किया या तीसरे ने किया, चौथे ने किया, तो आपके अंदर अगर ये स्किल नहीं होती तो आप कर पाते। ये चीज बच्चों को दीजिए। कोविड के समय में बहुत सारे स्कूली बच्चों ने ऐप बनाए, वेबसाइट बनाई, प्लेटफॉर्म बनाए और लोगों को फैसिलिटीज की इंफॉर्मेशन दी। इस एक छोटी सी घटना ने बच्चों में सारी स्किल्स डेवलप की, कम्युनिकेटिव की डेवलप की, क्रिएटिविटी डेवलप की, प्रॉब्लम सॉल्विंग डेवलप की, सोशल स्किल डेवलप किया, लीडरशिप डेवलप किया। ऐसे बच्चे जब जीवन में बढ़ेंगे तो एक बड़ा कॉन्फिडेंस होगा, मोटिवेशन होगा। तो मैं अंतिम डिस्कशन आपसे कर रहा हूं 360 डिग्री असेसमेंट का। 360 डिग्री असेसमेंट में एनईपी कहती है कि पीयर भी असेसमेंट करे, बच्चा खुद को सेल्फ असेस करे और टीचर भी असेस करे। लेकिन ये शब्द उतना आसान नहीं जितना हम भाषणों में बोलते हैं। ये 360 डिग्री असेसमेंट का मतलब यही है कि बच्चे की कंप्लीट पर्सनालिटी असेस हो सकता है पेन पेपर में 80% हो, लीडरशिप में 100 हो, राइटिंग में हो सकता 100 हो सकता आर्ट्स में 100 हो। तो अगर आप अपने बच्चे को कंप्लीट असेस करेंगे तो जो उसकी स्ट्रेंथ है, जो उसकी कोर कॉम्पिटेंसी है, जो उसकी हॉबी है, जो उसके दिल के करीब है, वहां जीवन बना लेगा और डिप्रेशन में नहीं जाएगा। दुनिया में जितने भी लोग टॉप पर हैं वो एक ही स्किल को तरासे हैं। कहते ना कि भगवान कृष्ण में 16 कलाएं होती थी, भगवान कृष्ण में 16 कलाएं थी। एक कला भी आपके बच्चे के अंदर आ जाए, इतनी स्किल्स हैं। एक कम्युनिकेशन स्किल लीडर्स में होती है, देश को लीड करते हैं, राइट। एक कोलैबोरेटिव स्किल टीम स्किल होती है, किसी एक में वो 1000 लोगों की टीम को लीड करते हैं। राइटर में सिर्फ लिखने की कला होती है, वो कहां से कहां चला जाता है। आर्टिस्ट में सिर्फ पेंटिंग करने की कला होती है, वो कहां से कहां पहुंच जाता है, राइट। तो मेरा रिक्वेस्ट ये है कि असेसमेंट, पेन पेपर असेसमेंट सिर्फ और सिर्फ वही नहीं हो जो किताबों में रटने के लिए दिया गया है, क्योंकि वो किताबें बहाना है। उन 5 किताबों के बहाने कलाएं डेवलप करनी है, कॉम्पिटेंसी डेवलप करनी है, स्किल डेवलप करनी है। आपके टीचर जब फिजिक्स पढ़ाए तो फिजिक्स का फॉर्मूला समझाते समझाते उस बच्चे में ये कलाएं डेवलप हो रही कि नहीं, इसको देखे। तो ये एक रिक्वेस्ट मेरी है कि 360 डिग्री असेसमेंट, पेन पेपर असेसमेंट बहुत आसान है, सबसे शॉर्ट तरीका। आप एक ऑनलाइन टेस्ट लीजिए, आधे घंटे दे दीजिए, सारे बच्चों से बोलिए वीडियो ऑन करके रखें, आप ऑब्जर्व करते रहिए कि बच्चा गलत नहीं करे, बच्चा सही लिखे, और 60-70% ऑब्जेक्टिविटी हो जाए। और ज्यादा करना है, पेरेंट्स को बोलिए पेरेंट्स पास में बैठ जाए, तो अगर आपको ये लगे कि कुछ गलत काम कर रहा है वो भी मिनिमम हो जाएगी। उससे भी बेटर तरीका, ऐसे टूल अब आ गए हैं कि बच्चा कुछ गलत कर ही नहीं सकता, आपको रिपोर्टिंग हो जाएगी।
बच्चा अपने तरीके से करेगा। और आपको करना है तो क्रिएटिव क्वेश्चन दे दीजिए, आप इस तरीके से पढ़ाइए कि वो बच्चा उस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सके, और ऐसा क्रिएटिव क्वेश्चन दीजिए जो बुक में नहीं, जो सोच करके लिखे। तो देयर आर मेनी टूल्स जहां पेन पेपर असेसमेंट आप कर सकते हैं। मैं डिस्कस कर रहा हूं पेन पेपर के अलावा भी मोर देन 10 असेसमेंट के तरीके हैं, प्रोजेक्ट बेस्ड, प्रैक्टिकल बेस्ड, एक्टिविटी बेस्ड, लैब बेस्ड, देयर आर मेनी, इवन कम्युनिकेशन, सारी स्किल्स के तरीके अलग अलग हैं। जब आपका बच्चा अपना एक प्रोजेक्ट पेपर, सेमिनार पेपर प्रेजेंट करेगा तो वही प्रेजेंट कर पाएगा जब उसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी, और अगर कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं होगी तो प्रेजेंटेशन के लिए वो प्रैक्टिस करेगा। तो आपका एक प्रोजेक्ट पेपर सारी स्किल को डेवलप करेगा। वो इनोवेटिव तरीके से सर्च करेगा, क्रिएटिव तरीके से वो ढूंढेगा, कोलैबोरेटिव तरीके से 4 लोगों से बात करके मदद लेगा, वो कम्युनिकेटिव होगा तभी प्रेजेंट करेगा। तो ये छठी डिस्कशन मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो गए हैं और हमारे पास भी कोई उपाय नहीं है सिवाय इन्हीं चीजों पर जाने की। हमारी मजबूरी है कि हम आपसे प्री बोर्ड, मिड टर्म, यूनिट टेस्ट, प्रीवियस परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं जो रोट लर्निंग से आए हुए रिजल्ट हैं। अगला वर्ष ऐसा नहीं होना चाहिए, आपके हाथ में नया टूल होना चाहिए और आज से आपको कमर कसनी है। अब आप अपने असेसमेंट पर सिर्फ इन 4-5 जो टर्म पेपर होते हैं, जो पेन पेपर होते हैं, अब आप इवॉल्व करिए और इसकी वैल्यू कम कर दीजिए। आप ये टेस्ट करिए लेकिन इसके साथ साथ स्किल, कॉम्पिटेंसी और बाकियों की टेस्टिंग शुरू करिए, और वो तभी होगा जब बच्चा पार्टिसिपेटिव होगा। मैंने आप सारे प्रिंसिपल से जो भी 6 डिस्कशन किए हैं, मैंने आप प्रिंसिपल से जो लास्ट 6 डिस्कशन किए हैं वो एनईपी बेस्ड हैं। ऑल डिस्कशंस न्यू एजुकेशन पॉलिसी से लिंक्ड हैं। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जो नया टूल नेक्स्ट ईयर आप पढ़ाएं और अपनाएं वो एनईपी आपको कहती है, क्योंकि यही तरीका है जब आपके बच्चे रिसर्च ओरिएंटेड होंगे, जब आपके बच्चे एक अच्छे इंसान के रूप में आगे बढ़ेंगे, जब आपके बच्चे एथिकल होंगे, वैल्यू बेस्ड होंगे, कॉम्पिटेंसी बेस्ड होंगे, स्किल को डेवलप करेंगे, उसका तरीका यही है। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आने वाला समय आपका स्टार्ट हो चुका है, रिजल्ट सीबीएसई निकाल देगा, अब आप उसके लिए मत परेशान हो। तरीका इतना ब्रॉड होगा, प्लेटफॉर्म इतना बड़ा होगा कि किसी बच्चे का नुकसान नहीं होगा। हम समय से रिजल्ट देंगे जिससे फॉरेन एडमिशन और हायर इंस्टीट्यूट के एडमिशन में डिले नहीं हो, वो भी हम काम करेंगे। कोविड सिचुएशन नॉर्मल होगी तो जो बच्चे डिससेटिस्फाई होंगे उनका री एग्जाम भी ले सकेंगे। तो सारे ऑप्शंस हमारे पास हैं, उसकी चिंता आप नहीं करें। आपको चिंता भी ये करनी है आने वाले समय में लर्निंग गैप नहीं हो, रोट लर्निंग नहीं हो, और बच्चों की प्रॉपर पार्टिसिपेटिव स्टडी हो सके। जो भी चैलेंजेस आपके सामने हैं उसको सॉल्व करने के लिए ही आप प्रिंसिपल हैं, आप प्रधानाचार्य हैं, आप प्रिंसिपल हैं, आप प्रॉब्लम सॉल्वर हैं। नए नए इनोवेटिव मेथड से नई नई टेक्निक्स को आप इवॉल्व करें। तो अपनी इन्हीं बातों के साथ एक बार मैं फिर आप सबको Sir, if time permits, sir, can we make 2 questions? If you allow, only 2 questions can take, sir. Yeah. Let me conclude my statement. Yeah, please, sir, please. Yeah, then you can ask any question. Yeah, I will give. Yeah. Finally, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, ये एक टफ टाइम है कोविड का, और हम एज ए टीम स्पिरिट हम इससे बच सकते हैं, दूर रह सकते हैं। ये एक ऐसा समय जिसमें हमको और आपको भी नहीं मालूम है कि स्कूल कब तक लॉकडाउन की स्थिति में रहेंगे, इसलिए हम वेट नहीं करें और डिफरेंट मोड से हम आगे बढ़ें, जो हमने लास्ट आपसे डिस्कस किया है। हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है असेसमेंट को चेंज करने की, होलिस्टिक डेवलपमेंट की, होलिस्टिक लर्निंग की। उसके लिए आपको टूल बनाने होंगे, मेहनत करनी होगी, हार्ड वर्क करना होगा, फिर आप इन चीजों तक बढ़ पाएंगे और कर पाएंगे। और एक अंतिम चीज जो मैं आपके माध्यम से आपको और आपके टीचर को और बच्चों को एक संदेश देना चाहूंगा, देखिए परीक्षाएं होती रहती हैं और परीक्षाओं के रिजल्ट भी होते रहते हैं, लेकिन कोई भी परीक्षा बच्चे की जिंदगी की अंतिम परीक्षा नहीं होती। परीक्षा एक सीढ़ी होती है जिसको पार करके बच्चा अगली सीढ़ी पर चढ़ता है। तो ये ध्यान रखें कि हम जो परीक्षाएं ले रहे हैं
वो बच्चे को अगले कदम की तरफ बढ़ाने में कितनी कारगर हो रही है। नंबर महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि जो मार्क्स आपके बच्चों को मिलते हैं वो 2, 4, 6, 10 दिन में बच्चे भूल जाते हैं। हम में से किसी को भी नहीं याद होगा हम 6, 7, 8, 9th में कितने मार्क्स पाए थे और किस सब्जेक्ट्स में कितने नंबर। बच्चों के साथ भी यही होता है। मार्क्स की रेस में बच्चे पूरी जिंदगी नहीं खराब करें, इसलिए आप अपने तरीके को बदलिए। एक बार रिजल्ट आने के बाद जब बच्चा लाइफ में एंटर करता है तो कॉम्पिटेंसीज और स्किल ही काम आती हैं। इसलिए मेरे डियर प्रिंसिपल्स एंड टीचर्स, आप सबसे सक्सेसफुल तब होंगे जब आपके स्कूल से निकलने वाला बच्चा वन ऑफ द बेस्ट कम्युनिकेटर होगा, वन ऑफ द बेस्ट लीडर होगा, वन ऑफ द बेस्ट प्रॉब्लम सॉल्वर होगा, वन ऑफ द बेस्ट कोलैबोरेटर होगा, वन ऑफ द बेस्ट सोशल स्किल वाला होगा, जो अपने इन्वायरमेंट को, अपने सोसाइटी को, अपने नेचुरल रिसोर्सेस को प्रिजर्व करेगा और आगे बढ़ाएगा। तो आपकी सक्सेस डिपेंड करेगी मार्क्स पर नहीं, आपकी सक्सेस डिपेंड करेगी कितने लीडर क्रिएट किया, कितने इनोवेटर्स क्रिएट किए, कितने आपने अपने यहाँ क्रिएटिविटी को बढ़ावा दिया। डियर प्रिंसिपल्स एंड टीचर्स, आने वाले समय की मैं आपको कांग्रेचुलेशन देता हूँ, अपनी बेस्ट विशेष देता हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को, पेडागोजी को चेंज करें, अपनी स्टडी को एक्सपीरियंशियल बनाएं, जॉयफुल बनाएं, पार्टिसिपेटिव बनाएं, लर्निंग बाय डूइंग बनाएं, सेल्फ स्टडी को प्रमोट करें, एक्टिविटीज प्रोजेक्ट पर मैक्सिमम थ्रस्ट दें और बच्चों के स्किल और कॉम्पिटेंसी को असेस करें और उनको शार्पन करें, उनकी हैबिट्स को डेवलप करें, पेरेंट्स को इन्वॉल्व करें। ये काम बड़ा नहीं है, आसान भी नहीं है। यह तभी होगा जब आप मेहनत करेंगे, जब आप पैशनेट होंगे, जब आप जिद करेंगे। अगर आप सिर्फ अपने ऑफिसेज में बैठे रहेंगे और एडमिशन प्रोसेस और फाइनेंशियल देखते रहेंगे तो शिक्षा व्यवस्था नहीं बदलने वाली है। लेकिन अपने कमरे से निकलेंगे और अपने क्लासरूम्स की तरफ बढ़ेंगे तो सारे परिवर्तन धीरे धीरे होते चले जाएंगे। एक बार फिर मुझे इनवाइट करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। माई बेस्ट विशेष, माई कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप इस दिशा में आगे बढ़ेंगे और एजुकेशन को, नई एजुकेशन पॉलिसी को कहीं न कहीं लेकर के अपने क्लासरूम में इनकलकेट करेंगे। थैंक यू प्रमोद जी, थैंक यू गोपीनाथ जी, थैंक्स लॉट एंड आप क्वेश्चंस के लिए इनवाइटेड हैं। Thank you, sir. Thank you very much. Now let me tell you, today your seminar, आपका व्याख्यान 750 प्रिंसिपल्स देख रहे हैं 11 कंट्रीज से, 7 गल्फ की कंट्री, इंडिया, साउथ अफ्रीका और युगांडा, एंड नियर अबाउट 1500 ऑन द फेसबुक पेज। एंड सर, आपके विचारों से ही प्रेरित होकर हम लोगों ने अभी जो पैनल डिस्कशन रखा है उसमें स्टूडेंट्स हैं। There are 5 students who will be discussing in the panel discussion. I would like to request Srinath Gopinath Sir, one second. Sir, to one ask second. students from the Sir. parents, from the Sir, students. Mahajan sir, 1 second. Yeah. We have already decided to make 2 questions. 2 principals are students. ready. Yeah. Rita Tanuja ma'am, she is our zonal director. Rajasthan can ask the first question. Then Dr. Rajiv Chauhan from Muscat. Rita ma'am, you first. Good morning, good afternoon, sir. Sir, will there be a change in the syllabus also with a change in the project-based learning? And we are trying our level best, sir, to provide experiential learning. We are working on the graphic novels that are already uploaded on the Diksha platform. But sir, will there be some change as per the directions so that we are all able to do it equally pan-India? Thank you, Rita ma'am. और देखिए, आप लोग एक्सपीरियंस्ड और सीनियर लोग हैं और आप लोग इस बात से सहमत होंगे, एग्री करेंगे कि सिलेबस चेंज करने की जरूरत नहीं, सिर्फ करिकुलम पर हमको ध्यान देना है। सिलेबस तो जस्ट लाइक एक बाई प्रोडक्ट है, एक बुक हमारे हाथ में है, कॉन्सेप्ट हमारे हाथ में। दुनिया के सारे कंट्रीज में ऑलमोस्ट यही सिलेबस है। मैथ है, साइंस है, सोशल साइंस है, थोड़ा सोशल साइंस और लैंग्वेज अपने अकॉर्डिंग लोग कर लेते हैं। तो मेरा ये मानना है कि जो भी सिलेबस आप पढ़ा रहे हैं वो सिलेबस दुनिया के ऑलमोस्ट सारे कंट्रीज में कॉमन होता है। परिवर्तन कहाँ करना है, चेंज कहाँ करना है, बदलना कहाँ है, वो करिकुलम है, वो पेडागोजी है, वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है और उसको बदलने के लिए किसी ने आपको मना नहीं किया। और अगर आप प्रिंसिपल हैं और आप इनोवेटिव, क्रिएटिव हैं, पार्टिसिपेटिव हैं, इन चीजों को समझती हैं, पेडागोजी को आप समझती हैं,
आपको पता अगर है कि कौन से पेडागोजी आपके टीचर लेकर के आए कि क्लासरूम रोट लर्निंग से एक्सपीरियंशियल हो जाए, स्टोरी टेलिंग पर हो जाए, ड्रामेटिक्स पे शिफ्ट हो जाए, आर्ट इंटीग्रेटेड हो जाए, स्पोर्ट इंटीग्रेटेड हो जाए, आपका टीचर कितने तरीके से कम्युनिकेट करे, कैसे इंक्विजिटिवनेस बनाए, कैसे क्यूरियोसिटी बढ़ाए, कैसे पार्टिसिपेटिव बनाए, तो सारी समस्या खत्म हो जाती है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि नई एजुकेशन पॉलिसी पेडागोजी चेंज की बात करती है, करिकुलम रिफॉर्म की बात करती है। सिलेबस में तो प्लस माइनस एक साइंस का नया एक्सपेरिमेंट होगा, ऐड हो जाएगा और कोई पुरानी चीज बाहर चली जाएगी। स्टोरीज में, आपके लिटरेचर में, लैंग्वेज में, सोशल साइंस में हो सकता है पॉवर्टी चली जाए और हो सकता है कोई नया एक डोमेन आ जाए, हो सकता है कि आपके पास कोई इकोनॉमी का नया चीज आ जाए। तो सिलेबस इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है उस दिए गए कॉन्सेप्ट्स में आप पेडागोजिकल चेंजेस कैसे करते हैं, करिकुलम रिफॉर्म कैसे करते हैं, उसके लिए किसी ने नहीं रोका है। पेडागोजी और करिकुलम दुनिया में वर्ल्ड वाइड हर जगह हमारे पास अवेलेबल है। आपको सिर्फ अपने टीचर्स को ओरिएंट करने की जरूरत है, ट्रेंड करने की जरूरत है, कन्विंस करने की जरूरत है, पेरेंट्स को पार्टिसिपेटिव कराने की जरूरत है। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप इन सब चीजों को देखेंगे तो सिलेबस चेंज की डिमांड कभी नहीं आएगी। दूसरा, आपका प्रश्न अगर ये है कि क्या हम इस बार सिलेबस कम करेंगे, घटाएंगे, बढ़ाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि हमें करना चाहिए, क्योंकि जो सिलेबस आपके बुक्स में दिया गया है बहुत प्लान करके दिया गया है। जो 8th में है, 9th कुछ डिफरेंट होगा, 10th कुछ डिफरेंट होगा। अगर कट कर देंगे तो नेक्स्ट स्टेप में बच्चों को कनेक्ट करना मुश्किल होगा। तो अब हम सबको मालूम है कि हमको नए टेक्नोलॉजी से स्टडी करानी है, ऑनलाइन ब्लेंडेड मोड में चलना है, तो मुझे लगता है कि सिलेबस कट करना बुद्धिमानी नहीं होगी। तो मेरा आपको यही आंसर है कि पेडागोजिकल और करिकुलम रिफॉर्म पर ध्यान दें, जिसके लिए आप कैपेबल हैं, कॉम्पिटेंट हैं और आप कर सकते हैं। Thank you for your reassuring us, sir. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Dr. Rajiv Chauhan from Muscat. Sir, please. This is the last question. Then I request Anurag sir to, watch our panel discussion also. All expert panel members are there, if time permits, sir. So, second question, Dr. Rajiv Chauhan. I'm sorry, there is some, he was there. Okay. I think there's some. A.P.Sharma sir. A.P.Sharma sir, please आप पूछिए. Now, Sharma sir, you can, Mr. Sir, one second. Good morning from Doha, sir. And Suprabhat. Sir, your camera is off. Sharma sir, yeah, please, sir. Sir, very good morning from Doha. Here we are having good morning and good afternoon in India. आपका भाषण सुन के एकदम रोम खड़े हो गए। आपने जो अभिव्यक्ति दी है दैट इज अमेजिंग सर। सो 21-22 में सीबीएसई को फिर से एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी एग्जामिनेशंस वगैरह की। अगर इस पे कोई विचार, कोई दृष्टि आप डालें, कुछ किसी तरह का हमें बताएं कि किस तरह से एग्जामिनेशंस, मिनिमम कौन से एग्जामिनेशंस करने चाहिए, क्योंकि इस संदर्भ में अभी right now online examinations are going on somewhere, offline examinations are going on in various countries. There is a different situation. थैंक यू शर्मा जी। जो भी एग्जाम्स की गाइडलाइन होगी उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं और हमें भी पता है कि कुछ न कुछ नया ब्लेंडेड मॉडल हमें लेकर के आना चाहिए, जिससे अगला वर्ष बच्चों का खराब ना हो और नेक्स्ट जब हम अप्रैल में हो तो ये ना हो कि हम एग्जाम लेंगे कि करेंगे। हमको कोई ना कोई ब्लेंडेड अप्रोच रखनी पड़ेगी और हमको पता है कि दुनिया में ऐसे बहुत सारी चीजें इवॉल्व हो चुकी हैं, असेसमेंट करने के बेटर तरीके आ चुके हैं। तो हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि जब आप नया सेशन स्टार्ट करें तो ऑनलाइन, ऑफलाइन, ब्लेंडेड अप्रोच में डिफरेंट चीजों को आप जरूर स्टार्ट करें। हालांकि आप करते हैं, जब आप 1 to 9th और 11th के साथ वो सारी चीजें करते हैं, आप इंटरनल भी करते हैं, प्रैक्टिकल भी करते हैं, प्रोजेक्ट भी कराते हैं, उनकी सारी चीजों को आप देखते हैं। 10th और 12th चूंकि पेन पेपर एग्जाम है तो थोड़ा सा आपके बच्चे रोट लर्निंग पर शिफ्ट हो जाते हैं। आने वाले समय में न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमें डायरेक्ट करती है कि हम अपने इस पेन पेपर के एग्जाम को मिनिमम इंपॉर्टेंस दें और असेसमेंट के डिफरेंट तरीकों को हम लेके चलें, जिससे बच्चों की लर्निंग बदले। आपके टीचर और आपके प्रिंसिपल भी यही कहते हैं कि सर आप अपने क्वेश्चन पेपर के पैटर्न को बदलिए तो हम पढ़ाने का तरीका बदल लेंगे। हम क्वेश्चन पेपर के पैटर्न को 3, 4, 5 वर्षों में पूरा बदलेंगे, आप पढ़ाने के तरीकों को बदलिए।
पढ़ाने के तरीकों पे हम डिस्कस कर चुके हैं, पेडागोजिकल चेंजेस पर, कि छोटे छोटे उपाय लेकर के क्लासेस को इंटरेस्टिंग कैसे बनाएं, पार्टिसिपेटिव कैसे बनाएं, इन्वॉल्व कैसे करें, लर्निंग बाय डूइंग कैसे करें, जिससे आपकी क्लासेस जॉयफुल हो और कुछ ना कुछ नया रिसर्च हो, नई बबलिंग हो। असेसमेंट आप पूरे वर्ष भर जो करें, मैंने आपको हिंट किया कि प्रोजेक्ट बेस्ड असेसमेंट स्टार्ट करें, आप एक्टिविटी बेस्ड असेसमेंट स्टार्ट करें, इवन विजिट्स आपकी होती है, आपके बच्चे सोशल वर्क करते हैं, आपके बच्चे इमोशनल वर्क करते हैं, आपके बच्चे इनोवेटिव वर्क करते हैं, आप उनको प्रमोट करें कि बच्चा अपना प्रोफाइल बनाए। अभी आपका बच्चा जब फॉरेन कंट्री जाना चाहता तब काउंसलर के टच में आता और प्रोफाइल बनाना शुरू करता है। आप अपने बच्चे के प्रोफाइल 8th 9th से स्टार्ट करिए, कि आपका हर बच्चा अपने प्रोफाइल बनाए और उस प्रोफाइल के एक वैल्यू रखिए आप अपने असेसमेंट में। उस वैल्यू में आप ये देखिए कि बच्चा उसमें कितना इनोवेटिव क्रिएटिव कर रहा है, सोशल वर्क कितना किया, एनवायरमेंट वर्क कितना किया, एनर्जी कंजर्वेशन को लेकर कितना किया है, पेरेंट्स को लेकर के कितना किया है, पॉवर्टी को लेकर के कितने रिसर्च किया है, इवन आपके यहाँ जो तमाम सारी प्रॉब्लम्स है कंट्री की, एनार्कीज है, तमाम सारी क्राइम है आपके यहाँ, अनइक्वलिटी आपके यहाँ, चाइल्ड लेबर है आपके यहाँ, दीज प्रॉब्लम्स को लेकर के आपके बच्चे ने कितने वर्क किए हैं। ये एक प्रोफाइल है। जब बच्चों को मोटिवेट करेंगे तो बच्चे इसको करना शुरू करेंगे, और जब करेंगे तो उनकी हैबिट्स पड़ेंगी, और हैबिट्स पड़ेंगी तभी वो बेटर इंसान के रूप में आगे बढ़ेंगे। मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि ये जो पैरामीटर्स असेसमेंट के हैं, आप वेट नहीं करिए, आप इवॉल्व करिए, क्योंकि हम आपको जो भी पैरामीटर देंगे वो एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट में देंगे। ये सारी चीजें हम उम्मीद करते हैं कि उसमें इंक्लूड होंगे, और जैसे इस समय आएगा हम आपको सर्कुलेट करेंगे। शर्मा जी, Thank you so much, sir. And we are Sharma proud sir, you of can CBSE. proceed. Sharma sir, you can proceed with sir's permission. Your Yes, panel sir. discussion. So we are having Introduce your team first also. of all, sir, thank you very much. And it was an amazing talk. And we are proud of being associated with CBSE, because CBSE is one board which is taking continuous steps and guiding principals and teachers. Other boards are taking that particular kind of guidance and kind of a following up from CBSE. So really we are very proud, and it was your today's talk was amazing. I think it was an eye opener for many of us. So sir, now we are moving towards the panel discussion. Shri, if you can bring the panel on. Yeah. So it is on, sir, futuristic education. So from your thoughts, I'm taking some thoughts. We'll be asking some questions to few of the principals over here. And any question, even if you would like to answer, we will be very happy. So, sir, first question I'm asking, and in first round, we are giving 2 to 3 minutes to every panel member. And the panel members here are Miss Manila, Mr. Shahjahan, Dr. Subhash Nair, Miss Pallavi, Miss Bindhu, Miss Deepa, and Mr. Mahajan. So the first question is to Miss Manila. Do you think we jumped around 5 years in digitalization of education due to COVID? Then what is ahead? Thank you, Mr. Sharma, for this question. Well, the answer is yes. Not a simple yes, but a resounding yes. In fact, the jump is much more than 5 years and is a positive change for the teaching, learning fraternity. It has paved the way for viable alternative to traditional learning. It is said that necessity is the mother of invention, and COVID-19 has precisely done that. It has forced everyone associated with the education sector to wear their cap of problem solving and creative thinking to provide a radical and robust support for the continuous learning for the students as well as the teachers. We would have tarnished the future of our children if we were not that quick in adapting ourselves to the new requirement. Humanity has welcomed the rapid digitization for the positive effects that it has in terms of growth of the society and economic development. Teachers earlier did have the assumption that technology will replace them in the classroom, but it is not the technology that will replace them, but the teachers who are well versed in technology will replace those teachers who have not yet updated themselves with technology. In fact, digitization has led to a mind of inquiry as well as exploratory style of learning among the students, which is welcomed and embraced by the children who are born in this digital world. The revolutionary change in the growth of technology during COVID-19 has compelled
the edtech market to fine-tune their business models to provide solutions to educational institutions. This has in fact opened avenues for subject experts to reach wider audience without any boundaries. Similar has been the experience with the use of proctoring technology that has enabled the teachers to invigilate remotely. In addition, the digitization of the education has opened up avenues for global access of reading material that has far-reaching benefits. Lastly, the ability to teach and learn anywhere at any time has democratized the access to education to a wide range of learners, which is a very, very significant and positive development that will stand the test of time. Yes, Mr. Sharma. Ma'am, and the interesting thing is you said necessity is mother of invention, but I learned from Secretary Sir that curiosity is the father of invention. So you should have not only necessity, but curiosity also, then you will find the products of that particular system. And yes. Next question is, sir, you want to? Yes, sir. शर्मा जी, अगर आप मुझे अवसर देंगे तो मैं थैंक यू। बेसिकली हम सब लोग डिस्कस करते हैं कि बच्चों को क्यूरियस कैसे बनाएं और इनोवेटिव कैसे बनाएं, बट हम मिस करते हैं कि क्यूरियसिटी और इनोवेटिव के लिए हमें बच्चों को फ्रीडम देनी पड़ती है। और हमारा जो पेरेंट्स का जो घर का एटमॉस्फेयर होता है और स्कूल का जो टीचर का एटमॉस्फेयर होता है वो फ्रीडम्स के अगेंस्ट होता है, डिस्करेजिंग होता है। बहुत छोटे उदाहरण दूंगा कि एक बच्चा जब पैदा होता है 2 साल का होता है, 1 साल का होता है, एवरी टाइम उसके माँ बाप उसको मना करते हैं, ये मत करो ये टूट जाएगा, ये मत करो ये खराब हो जाएगा, चलो मत गिर जाओगे, टच मत करो ये हो जाएगा। और बच्चा नए नए इन्वेंशन करता है। इमेजिन करिए अपने छोटे बच्चों को, अपने ग्रैंड डॉटर ग्रैंड से याद करिए, 1 साल का, 1.5 साल का, 2 साल का बच्चा इनोवेट करता है, वो अपने हाथ में हर चीज उठाता है, टच एंड फील करता है, सेंसेस लेता है, 5 सेंसेस के थ्रू वो तमाम सारी चीजें सीखने का प्रयास करता है। उस उम्र में पेरेंट्स अगर मोटिवेट करेंगे, उस उम्र में अगर अच्छी पेरेंटिंग आप अपने पेरेंट्स को कर सकेंगे, तो आपका वो बच्चा जो छोटा है उसकी इनक्विजिटिवनेस बढ़ती जाएगी, इनोवेटिवनेस बढ़ती जाएगी। लेकिन उस 3 साल 4 साल के बच्चे को अगर आप डिस्करेज कर देंगे और आपको लगेगा कि आपको ही सब पता है, बच्चे को नहीं मालूम है, तो वो उसका वो तरीका वहीं किल हो जाएगा, साइकोलॉजिकल रूप से वो डंप होता जाएगा और आगे वो फियरफुल हो जाएगा। तो पेरेंट्स को ध्यान देने की जरूरत है कि बचपन, अर्ली चाइल्डहुड केयर बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्ली चाइल्डहुड में हम न्यूट्रिशियस डाइट के साथ साथ बच्चों के 5 सेंसेस को डेवलप कैसे करें, मोटिवेट और इंस्पायर कैसे करें, उनको मौका कैसे दें कि बच्चे उत्तर निकालें। आप छोटे से बच्चे को समय दीजिए और नया सोल्यूशन दे देगा, नई नई चीजें कर देगा, ये एक इम्पोर्टेंट। सिमिलरली बच्चा जब 3 साल का स्कूल में पहुंचता है तो उसको टीचर डिस्करेज करते हैं। वेरी फ्यू टीचर्स, वेरी फ्यू प्रिंसिपल होते हैं जो बड़े कोलैबोरेटिव होते हैं, इसीलिए टीचर को पहले मदर बनना पड़ता है। छोटे बच्चे के साथ टीचर अगर मदरली ट्रीट करेगी, फादर के एहसास कराएगी, तो बच्चा सीखेगा। लेकिन अगर टीचर डिसिप्लिन मेंटेन करेगी, डांट डपट करेगी, टफनेस लेके आएगी, तो बच्चा धीरे धीरे सीखना बंद कर देगा। तो 3, 4, 5 जो हमारी प्राइमरी एजुकेशन होती है, नर्सरी, केजी, अपर केजी 1, 2, मेरे कहने का मतलब है कि 7 to 8 ईयर तक बच्चे का ब्रेन ऑलमोस्ट 85% डेवलप हो जाता है, उसके थॉट्स क्रिएट हो जाते हैं, हैबिट्स बन जाती हैं। अगर उस समय हमने केयर नहीं किया तो कोई क्यूरियोसिटी, कोई इनक्विजिटिवनेस, कोई कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी डेवलप होना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए बचपन में 7-8 ईयर तक बहुत जरूरी है इस हैबिट की तरफ ले जाना, ठीक है ना। आइंस्टीन ने, आर्किमिडीज ने या न्यूटन ने अगर इन चीजों को डेवलप किया तो उनके घर में एक एटमॉस्फेयर मिला, वो 1000 टाइम फेल होते रहे लेकिन फिर भी मोटिवेट किए जाते रहे, इनकरेज किए जाते रहे। गलतियां करने के लिए मोटिवेट करना सबसे बड़ा टूल है बच्चे की क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए। तो प्लीज एक टूल अगर आप अपना लें कि आपका बच्चा गलती करे, आप मोटिवेट करिए अपने बच्चे को गलती करने के लिए, आपका बच्चा साइंटिस्ट होकर निकलेगा। तो चूंकि शर्मा जी आपने टच किया इस चीज को, इफेक्टिवनेस कैसे बढ़ाएं, उसके लिए छोटे छोटे उपाय करने हैं एंड ऑब्जर्व करना है कि आपका तरीका कहीं बच्चों को डिस्करेज तो नहीं कर रहा है। अगर वो डिस्करेज हो गया तो दोबारा फिर बच्चे को आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए एटमॉस्फेयर
बहुत जरूरी है, टीचर ट्रेनिंग बहुत जरूरी है जी। यस सर, टीचर को मदर बनना पड़ेगा और मदर को टीचर बनना पड़ेगा। जैसे आपने एग्जांपल दिया आर्किमिडीज का, न्यूटन का, उनके टीचर मदर बने, पर एक थॉमस अल्वा एडिसन थे जिनकी मदर टीचर बनी, जिनको स्कूल से निकाल दिया गया था कि यू आर नॉट फिट फॉर द स्कूल, एंड थॉमस अल्वा एडिसन हैज डन ग्रेट थिंग्स। सर, नाउ वी हैव वन स्टूडेंट हु विल बी आस्किंग क्वेश्चन, सो ही इज जतन कालरा फ्रॉम प्रूडेंस स्कूल। शर्मा जी, इसके बाद मैं आप सबसे विदा लूंगा, मैं क्विट करूंगा, आप लोग कंटिन्यू करिएगा। मेरी बेस्ट विशेष जी। Yes sir, so this student is Jatan Kalra from Prudence School. Jatan, over to you. Thank you, sir. A very good afternoon to all the dignitaries present here. I am Jatan Kalra from Prudence School, Ashok Vihar. I'm greatly honored and privileged to be amongst all the eminent personalities here. My question to you is, do you think that our generation will be fit for the future jobs? शर्मा जी, इसका उत्तर मैं दे सकता हूँ? बिल्कुल आपके लिए ये सर ये क्वेश्चन। बेटा, कोई भी जनरेशन, उसके दो कदम होते हैं। मेरे साथ भी, हमारे साथ भी, सबके साथ होता है। हमारा जो एक कदम है वो पास्ट की तरफ होता है और दूसरा फ्यूचर की तरफ होता है। एंड एवरी लाइफ, एवरीवन की लाइफ में ऐसा होता है कि जब हम एक चीज छोड़ के दूसरी तरफ बढ़ते हैं। इम्पोर्टेंट ये है कि आपने फ्यूचर में अपना कदम बढ़ाने के लिए अपनी स्किल्स और कॉम्पिटेंसीज को कितना डेवलप किया है। आपको जानना पड़ेगा कि फ्यूचर के लिए कौन सी स्किल्स इंपॉर्टेंट है। और अगर आप इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे तो लास्ट हाफ एन आवर से मैं यही डिस्कस कर रहा था कि 21st सेंचुरी की स्किल्स सर्कुलेट की गई। हर पेरेंट, हर टीचर, हर बच्चे को जानना चाहिए कि कौन सी 21st सेंचुरी की स्किल्स हैं जो अगर बच्चों में नहीं होंगी तो फ्यूचर जॉब में फिट नहीं होंगे। आपने बहुत सही प्रश्न किया। और अगर 21st सेंचुरी की स्किल्स में आप मास्टर हैं तो दुनिया के किसी भी जॉब में, लेकिन आपने 21st सेंचुरी में स्किलिंग नहीं की, डेवलप नहीं किया, तो आप अनफिट होंगे, लाइफ में भी क्रम्बल करेंगे। और वो स्किल्स क्या है? वो स्किल्स बेटा कम्युनिकेटिव स्किल है, कोलैबोरेटिव स्किल है, क्रिएटिविटी की स्किल है, क्रिटिकल थिंकिंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग है, फ्लेक्सिबिलिटी है आपके पास, लीडरशिप है, प्रोडक्टिविटी है, इनिशिएटिवनेस है, सोशल स्किल्स है। दीज आर द स्किल्स अगर आप ड्यूरिंग स्कूल आवर्स, ड्यूरिंग स्पोर्ट आवर्स, ड्यूरिंग अपने डिफरेंट टाइम जो डिवोट कर रहे हैं दोस्तों के साथ, उनमें अगर इन स्किल को शार्पन करते हैं, असेस करते हैं, पेरेंट्स और टीचर सपोर्ट करते हैं, तो दुनिया के किसी भी फ्यूचर जॉब में आप फिट होंगे। थैंक यू बेटा, थैंक्स अ लॉट। और एक बार फिर मैं आप सबसे विदा लूंगा और एक बार धन्यवाद दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। अनुराग सर, सर अनुराग सर से दो बच्चे और हैं सर जो क्वेश्चन पूछना है, बच्चों का सवाल आप जरूर दे दें, ये मेरी निवेदन है। 2 मिनट लगेंगे सर, सर फटाफट जल्दी से 2 क्वेश्चन करवाइए। We have Samyukta from DPS East Bangalore. Samyukta, over to you. Thank you, sir. Good afternoon to all the dignitaries. My question is, how can teachers get ready to train students with futuristic skills? Very nice. देखिए, पहला तरीका ये है टीचर्स को उनके प्रिंसिपल्स ट्रेनिंग दें कि 21st सेंचुरी स्किल्स क्या क्या हैं और कैसे डेवलप होती हैं। देखिए, ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। आपने एक क्वेश्चन किया कि 21st सेंचुरी की स्किल्स को टीचर्स किस तरीके से आप बच्चों में इनकलकेट करें। देखो, टीचर सिर्फ गाइड की भूमिका में हो सकते हैं। ऑल स्किल्स आपके भीतर सीड्स के रूप में, एवरी स्किल आपके भीतर है। एक छोटा सा बीज होता है ना, आप उसको खाद पानी प्रकाश दे दो, एटमॉस्फेयर दे दो, और वृक्ष भी बनेगा, फ्रूट्स भी देगा, 1000 ईयर तक ऑक्सीजन भी देगा, छाया भी देगा। उस बीज को उठा करके आप डंप कर दो, ड्राई करके रख दो, कुछ भी नहीं होगा। वैसे आप बच्चे होते हैं, आपके अंदर एवरीथिंग है। और आपने इतना बढ़िया प्रश्न किया है तो मैं आपको जरूर हिंट करूंगा, जो हमारा जीनोम है, जब एक छोटे से बच्चे का जन्म होता है, ठीक है ना, मेल और फीमेल के, उससे जब एक छोटे से बच्चे का एम्ब्रायो का जब जन्म होता है, एक छोटा सा एटम की तरह होता सेल होती है, उसमें जीनोम आ जाता है और सारी कोडिंग वही होती है। तो आप साइंटिस्ट से और डॉक्टर से बात करेंगे तो जब माँ के गर्भ में एक छोटी सी सेल क्रिएट होती है मेल और फीमेल से,
उसमें पूरा का पूरा जीनोम स्ट्रक्चर कोडिंग के फॉर्म में डेवलप हो जाता है। पूरी लाइफ भर बच्चे उसको डिकोड करते हैं। 9 ईयर तक माँ के गर्भ में डिकोडिंग होती है एंड उसके बाद पूरे जीवन भर आप उसको डिकोड करते हैं। ये बड़ी साइंटिफिक चीज है, मैं जनरल बात नहीं कर रहा हूँ। डिकोड करने के लिए आपको एटमॉस्फेयर की जरूरत पड़ती है, जैसे सीड को पड़ती है। एटमॉस्फेयर माँ बाप घर में देंगे, स्कूल में टीचर देंगे और अच्छी सोसाइटी जैसे हम लोग आपको देंगे। जब हम आपको अच्छा एटमॉस्फेयर देंगे तो आप सारी स्किलिंग डेवलप करेंगे। आपके माँ बाप आपको क्यूरियस बनाएंगे, आपके माँ बाप आपको सेंसिटिव बनाएंगे, आपके माँ बाप आप पे टीम वर्क डेवलप करेंगे, केयरिंग एंड शेयरिंग की हैबिट डेवलप करेंगे, पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करेंगे, सपोर्ट करेंगे, इंस्पायर करेंगे, मोटिवेट करेंगे। तो आपका वो कोडिंग जो है वो बेटर वे में डिकोड, राइट? आप उसकी कोडिंग बढ़ते चली जाएगी। अगर आपके माँ बाप डिस्करेज करेंगे, टीचर डिस्करेज करेंगे, आपके साथ बुलिंग होगी, आप खुद भी पैशनेट नहीं होंगे, तो आपका वो जो कोड है वो बंद रहेगा, वो खुलेगा ही नहीं। तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आपकी जो 21st सेंचुरी की स्किल्स हैं, उसका सीड, उसका कोड आपके भीतर इटसेल्फ इनबिल्ट है। हमको, आपके माँ बाप को और टीचर को सबसे पहले अपने को ट्रेंड करना है कि आपको एटमॉस्फेयर कैसे दें। इसीलिए आपके प्रिंसिपल्स के सेमिनार में मैंने इन प्रिंसिपल्स को पेडागॉजिकल लीडर कहा है। पेडागॉजिकल लीडर का मतलब होता है इनकी जिम्मेदारी अपने लैक्स टीचर को पेडागॉजी की ट्रेनिंग देने की है। आपका टीचर अगर इंस्पायर करता होगा, मोटिवेटर होगा, स्टोरी टेलर होगा, ड्रामेटिशियन होगा, पार्टिसिपेटिव लर्नर होगा, प्रोजेक्ट्स कराएगा, एक्टिविटीज कराएगा, स्माइल देगा, कंधे पे हाथ रखेगा, तो आपकी कोडिंग उतनी ही ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। लेकिन आपका टीचर रिजिड होगा, टफ होगा, अहंकार में होगा, ईगो में होगा, आपके माँ बाप रफ होंगे, आपकी कोडिंग उतनी ही किल होती चली जाएगी। तो मैंने आपके प्रिंसिपल से बेटा ऑलरेडी रिक्वेस्ट किया है कि अपने टीचर्स को ट्रेंड करिए 21st सेंचुरी स्किल के लिए, और आपके पेरेंट की पेरेंटिंग करिए कि 21st सेंचुरी स्किल जो इनबिल्ट है उसको लिए बच्चे कैसे तैयार किए जाए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपका उत्तर मिल गया होगा। सर बहुत सुंदर। ये जो वेबिनार है ये बहुत ही यूजफुल रहेगी काफी लोगों के लिए। सर एक लास्ट बच्ची है, शी इज Krishna Ashok from Shri Sharda Vidyalaya, Kaladi, Kochi. So Sharda, over to you. Okay, good afternoon to the galaxy. Yes, sir. Good afternoon to the galaxy of dignitaries who are present here. I am Krishna Ashok Menon of Shri Sharda Vidyalaya, Kochi, and I am extremely grateful for this opportunity that has been bestowed upon me today. Now, my question is, there are several learning gaps that have been put in education due to this pandemic. So how are we planning to fill in these gaps? Yeah, thank you, beta. First of all, with this COVID situation, you have to prepare for self-study. You have to prepare for online education. You have to be prepared yourself for different type of teaching learning methods, right? Because in future, COVID may be extended for another 6 months, 9 months, 1 year. So the only way out for this, that every student and teacher should be trained for different type of learning, and that will be home study, self study, project and activity based study, जिसमें for that your parents and teachers support will be required. So there will be no learning gap, there will be no study gap, there will be no knowledge gap if you student will start self learning, self assessment, self platform projection. So please go ahead with projects, activities and self learning. The contribution of your teachers, the contribution of your parents will be to guide you, to spark you, to motivate you. It may be that face-to-face interaction may not be possible for next 6 months or next 1 year, but there will be many new methods for that. And with these new methods, learning gap will be maybe minimized. Thank you very much, sir. Kindly accept our sincere gratitude for giving this time, and this was amazing listening you, and one of the best I have ever heard you. And I had opportunity to heard you many times, but this was amazing. And I think all 3 questions from children were also very interesting.
So thank you, Sharma ji. Thank you, thank you Mishra so ji. much, sir. Thank you, Pramod Mahajan ji. Thank you, Gopinathan ji. Thank you, Subhash ji, Deepa ji. मेरे सामने जो दिख रहे हैं, बिंदु मैडम, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, पल्लवी मैम, थैंक यू, Have a good day ahead, शाहजहान, sir. के बहुत सारे लोग दिख रहे हैं, मैं सबका नाम नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है आप सबसे मिलकर, और दोनों बच्चों ने जिन्होंने पार्टिसिपेट किया और क्वेश्चन किया, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट. Sir, one humble request, sir. Please Yes. come and bless us in our second anniversary also in next year, June 6th. I will be there. Thank you. We will keep doing, sir. We will keep doing all our activities. That's really futuristic, Shri sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Have a Thanks for wonderful coming, day sir. ahead, Thanks sir. for coming, sir. Thank you. Stay safe, stay healthy. Thank you, sir. So Thank you. let's move to next question, and this question is for Mr. Shahjahan. So Shahjahan sir, the Please question spotlight is, all the panel members only, sir. Excuse me, Sharma sir. Please spotlight all the panel members immediately. Yeah, remove me from the spotlight, please. Only panel members and moderator. So the Please question is remove me. very. Sir, sorry, sir. Let us put all, because we have a limitation, only 6 members at a time. Please put the panel members first. Yeah, thank you. Shahjahan sir should come. So yes, Shahjahan Mr. sir, question to you is it scary to think that by 2025 existence of a school system may have a threat due to popularity of homeschooling? Right now online education is going on. Can you foresee some threat? Over to you, sir. Shahjahan sir, unmute yourself. Unmute, please. Oh, right. Excuse me. Thank you very much. All my this board of directors. Anyhow, Mr. Anurag Tripathi already left. Before coming to my answer, that I want to say, because this is an anniversary of our CEIR, because I must appreciate the blessing and encouragement given by Mr. Anurag Tripathi for the growth of CEIR to this stage. This day is very important. It means आज से 1 साल पहले जो कुछ हुआ वो इसका continuation. Now we rush to this. It's a tremendous improvement and development we made, and we are stand honored in a very prestigious way. We presented and we are stand for. Now I am answering the question, Sharma sir. Well, the pandemic situation of COVID-19 and all of the economic situation of the nation paved way to the development of the technology, as this turned the life to a new track, that is the shifting from the classroom education to online, which became inevitable in the absence of other alternatives. We are compelled to accept the new system. On the other hand, the further development of the it will depend upon the economic condition of the people. On the system, it's widely accepted. This online system is widely accepted by all beneficiaries of the education. The system developed very fast, as saying that, as you mentioned, that the necessity is the mother of invention. They added the curiosity is the father of invention. And now we reached at this stage. Recently, a lot of establishments emerged with their advanced application, which for the children, that's because they need not go to school and they can sit at home and attend complete their studies. Surely there is a commercial activity of the business class to explore the time wisely. The situation made people thinking, why we should go to the school? Children are safe at homes rather than moving around. Employees found comfortable to work at home policy, and employees found the system is economical. In fact, the pandemic situation compelled and prepared people to accept the new system easily. But we cannot ignore the merits of the real schooling. Children won't get such experience from their online system. The value of education may disappear, and we may feel the standard. Now itself we feel the standard of knowledge level of our children, general skill and general thinking skill, everything coming down. This fact accepted by everybody, no doubt at all.
So the preference is always for the direct school education with the real classroom system. But the pandemic situation and its development offered us an option either online or real, it means or real classroom. People can choose according to their will and according to the capacity or their financial capacity. And therefore, no doubt, the classroom education system depends on the economic stability of the people and the way of assessment of both system. If most of the people will go for the second option, that the online system, if the situation arises, the importance of the school will come down, and we can expect a radical change in the education system and the social system. So there is a chance for the closure of the existing school, or the part of the schools may close. They're compelled to do that because the system is going like that. That is the regarding the future. Everything will come. That we cannot stop anything. Whatever happen, it may happen. That's why we must accept all these things. But anyhow, it leads to subsequently it will lead to that unemployment and a drop in quality of the student, and which lead to new setup with the school, and without lead to a new setup, that is without school and without colleges. They can sit from home. They can foreign students can sit their home and they can continue their studies. Yes, wonderful. We can monitor the transformation and let's see what's happening. And that's nice, all. That's the answer that I can say only this much, sir. I hope that thank you so much, sir. I will involve all the participants also, who can put their thought in chat. What people who are the attendees think whether the homeschooling is or continuous online education is going on. Is it a scare to the school system? You can put up yes or no, or if you want to say something, I will read it out after this question. So I will read it out the name also. So my next question is to Subhash sir. I think everybody is thinking about future and what will be future of education. We heard Anurag ji, and Anurag ji said that this year, Mr. Sharma, there is a possibility that we will come up with some system of examination which will tell you in advance, so that next year there will not be a situation of no examination or something like that. We will come with. So what do you think that even in education system, how to deliver education and everything, what changes you foresee in future education system in next 5 years and onwards? Good afternoon, Sharmaji and all others. Sharmaji, the main change that I foresee is increased remote learning in the hybrid blended system of school education. This is going to continue. Monopoly of big players is going to make remote learning platforms expensive. The digital divide, if not addressed consciously and seriously, may be further increased. The digital divide may increase. Learning resources may become more efficient and effective, but more expensive due to monopoly of big players. Digital technologies will further get refined, as Manila ma'am said. However, the divide between what children want to learn and what they are taught in the school may increase. That divide may increase, what they want to learn and what is actually taught. This is despite the guidelines of the National Education Policy. Due to refinement of application of artificial intelligence in education, adaptive learning and adaptive assessment will further evolve. However, the success of these technologies or technological advancement will depend on examination board's approach towards assessment. Dr. Anurag ji has already reassured that CBSE is modifying the exam pattern. That's a good indication. Homeschooling will gain importance, as Shahjahan sir said. Students may spend minimum time in schools and learning will be more experiential and project-based, as what Anurag sir said. The importance and significance of schools in nurturing education, emotional development, and improvement of personality will also increase. I also see the possibility of teachers under the guidance of great agencies like CEIR developing free or affordable learning resources
and remote learning platforms, as our children deserve more. We cannot rule out increase in the humanoid or use of humanoid smart teachers for better knowledge transfer in future school systems. Thank you so much. Thank you, Dr. Subhash, and I will read out few chats here. Yes, Sunita ji has written that face-to-face offline education is good. Rashmi Saxena ji have written remote learning cannot replace school. Principal TSIS have written we must go away with pen paper exam as the only means of evaluation. Sunil Bhakkare has written yes, unexpected drastic change is likely to come up. Yes, so I think audience is finding it very interesting. Rajan, Miss Rajani Rana has written, no face-to-face environment of a school can't be neglected. Of course, that is our feeling being teacher and being in the education field. Shubhra Verma is saying blended learning is must. Yes, face-to-face learning is very effective. Sarita is saying. Then there are many other like Shilpa ji, no pen paper. So very good. Many of the people are telling about certain kind of things. And yes, of course, Shri Sanji would be putting the information about that I will answer, sir. No yes, problem. yes. Proceed, So sir. those things are there. So now I have question to Pallavi ji. So this is very interesting question since everybody is talking about NEP. You know, already our education minister as well as other people have told Mr. Kasturi Ranjan ji also that NEP will take around 30 to 35 years or more for complete implementation of NEP. Now, when this unexpected kind of pandemic and these kind of things are coming, how the flow will get affected? Over to you. Thank you, Sharma sir. Greetings to all the panelists and all the participants today. Sir, I think the question you have asked me has been answered by Anurag ji today. I mean, what he mentioned, the way CBSE is taking on the new education policy, sir, I differ. I feel we may be able to get results sooner than what we think. Come to think of it, sir, we had Shiksha Parv on Teachers' Day last year, where they have already started taking suggestions from so many educators around the world as to how changes should be brought about. The government has already improved the mission for foundational literacy and numeracy, something that was introduced this year. So we've already started working on it. In fact, the NCF, the groundwork has already started, sir. We as stakeholders know that the work is going on. So nothing is getting affected because of the pandemic. In fact, I feel we have taken it as an opportunity. We have been able to connect with people overseas. Imagine the kind of time we would have to have a conclave, what we are having today. We would all have had to travel. But today we are all sitting in 11 countries and we are talking to each other. At the click of a button, we have been able to join. So I think we have been able to, in fact, do things faster. The new education policy is talking about teacher training. Now, CBSE, CEIR, Diksha have taken these as opportunities. You know, those are the leaders, I feel, who take opportunities out of every circumstance. It is mandatory for teachers to have 50 hours of training every year. And sir, I think it has been very possible now because of the kind of platforms we are getting. Again, like I would again reiterate, we are able to connect to resource persons globally now. We don't have to restrict ourselves only to the city we are in. We are even able to reach out to the rural areas, to the areas where we usually felt there was, we could not have good resource persons. So I think these are advantages of the pandemic. When we talk about the new education policy is focusing on mental wellness, CBSE and has already initiated Manodarpan. We are connecting with students. We are trying to look at their mental health. And sir, I think the most important that I kept for the end is the main focus of the new education policy is that we need to move away from rote memorization. We need to move into competency-based, skill-based. Whatever Dr. Anurag Tripathi mentioned today, I think should reassure all of us that CBSE is on its job.
We are moving into more competency type based questions in the examination. Sir has started, encouraging, motivating principals, the pedagogical leaders for assessment, 360-degree assessment, another important aspect of the new education policy. If we already have started moving, we are looking at case-based study type questions, a 360-degree. When we are asked to evolve, I'm sure things will come up better. And I feel that the pandemic should not, we are all on our jobs, all of us, including us as principals, the educators, the teachers, the government authorities, bodies, CBSE to make it. We can see a lot of the new education policy, which is already a part of the CBSE initiatives. Ek Bharat, Shresth Bharat. We have so many scientific the toy-cathon, they did a toy fair, CBSE was associated. We are having so many different type of competitions for the children on mathematical. They are encouraging coding. So I think many aspects of the new education policy are already into the system, sir, and we should not be too far away. In fact, I personally, this is my personal opinion, I feel we should be able to see success sooner than predicted. Thank you. Thank you, Pallavi ma'am, for your thoughts. Yes, I received a good question. The feeling of one person, Mr. TVS Prakash Rao, he said, yes, pace of implementation of NEP will certainly slow down. Yes, there is no doubt, but it is a challenge for us. We have to keep pace with, we the principals are actually the grease, the wheels, and everything what is required to NEP to pull up. We have to pull up. And just I am taking advantage of this particular session. There was a question, Akanksha ji is asking, sir, when is your session? My next session is on flip learning, and that I will be telling you what are the new things which you can bring last year to this particular year to make the classroom interesting, and the way Dr. Anurag has told, I will be dealing it, and all other sessions are very interesting sessions. So you keep joining. So the questions are very interesting, but answers should be from our side, not necessarily keeping it in mind that what is ahead. Only thing is we should predict, foresee, and we have to move ahead. Again, I am giving one thought process for all the attendees, that just let us know that in NEP particularly, when you are thinking about teacher education, and in NEP it is mentioned that it will be not of 1 year, it will be of more years, like the integrated program of regional colleges. What is your thought on that? You tell me about that, and by the time I'm asking next question to Bindhu ma'am. So Bindhu ma'am, how online digital intervention? See, earlier not every school was using digitalization in education, and they were having their own ideas, they were having their own experiential learning experiences and all other kind of things. All of a sudden this digital intervention has come, and that has affected future course of education scenario. How do you say that it can be useful, the way if we deal? We have seen various kind of out of box thinking from various teachers, where teacher is doing different kind of jugards to reach out to children. So over to you, Bindhu ma'am. Thank you for the question, sir. Thank you and good afternoon to all the distinguished panelists and the audience and the moderator. So Anurag sir has already told extensively about how we can make use of, how we can turn this online classes into more effective ways of, how we can use it more effectively. See, now we are living in the era of fourth industrial revolution. So already we are talking about artificial intelligence, robotics, Internet of Things, 5G, blockchain technology, 3D printing, biological technology. So we have landed knowingly or unknowingly into online classes in 2020 without any training. That's really amazing. So actually, virtual school is the future. Virtual learning will play a major role in education by increasing access to qualified instructors and by improving knowledge base of the instructors. That is very certain.
And something about the past, in India, we have 630 million internet users. And, in 2016, 1.6 million users were there for various online classes. But now when it reached to 2021, it has become 9.6 million. So we are the second largest online market in the world, just after China. So we have to think about, as educators, how this online education, online classroom can be more productive and effective, as Anurag sir told. After a year of remote learning during COVID-19 pandemic, perspectives have changed and we start viewing technology as a necessary evil. Teachers understood the power of digital devices, apps, and tools, and that can increase encouragement, encourage collaboration, and spark the innovation and enhance student learning. There is no doubt about that. But in and of itself, this education technology or online classrooms, that doesn't result in effective learning and teaching. There is effort and strategy required to integrate it effectively into the course. Now the classroom has no walls. The learning environment no longer has no boundaries, and instruction can be provided by any number of subject matter experts in the real world. So technology allows students to expand their horizons by extending learning beyond textbooks. So a lot of lot of positives are there, and it encourages self-paced learning. Sir has talked about the self-learning. This allows them to learn digital literacy and 21st century skills. And I just put in a concept like 1:1 computing. That will be, the future will be like this. So this is an education practice where institutions will provide every student with a laptop or a tablet, allowing students to access internet, as well as preloaded course materials and textbooks. This creates an equitable classroom environment so the gap can be minimized, in which students have easy and equal access to information, and it boosts, the career readiness also. So a lot of advantages are there. E-learning is more affordable when you are having these online classes, and distant learning enables to mix study and work and family duties and maintain a balance between them. So physical presence is not needed. So I believe that this will be the norm, and it is in our hands that we have to make use of online classes, and how effectively that will be turned into, that it's in our hands. With that, Thank you, Bindhu ma'am. And I will read one question from chat box, and this is very interesting. Not a question, a statement. And then I will come to CB Mishra sir. This is Mr. Arogya Reddy from UAE is writing, the elite schools are doing great things. However, the rural divide needs a great deal to implementation NEP. Even online also, there is a big digital divide, which Bindhu ma'am also just addressed. So, Mishra sir, question to you is, what kind of paradigm shift do you expect in public-private schools in the light of digital divide? Very good question asked by Sharma sir. That is a very good question. Basically, when we are talking about this paradigm device, basically change in the private and public school, we are supposed to think that Anurag sir, and we are always thinking about the 21st century skill. Our pedagogical skills should be changed. Our methodology should be changed. Syllabi should be same. Curriculum should be focused. And pedagogy, methodology, and heterogogy. The three things are there. I am including one more part, that is heterogogy, the reference check. How we are taking the classes and how we are giving the lesson to the children. That is the most important part. As Anurag sir says, instead of focusing on the curriculum, we should focus on the 21st century skills, and that is the literacy skills, you can say learning skills and the life skills. Sir has discussed about the learning skills and the life skills basically. I'm just focusing on the literacy skills, that is the IMT, Information Media and Technology. Right now in this area, you can imagine number of videos you can find out, which is published or you can say posted by the rural area by making some videos and something like this. So they can get all these things. Nai Talim in 1937,
Nai Talim was introduced by Mahatma Gandhi ji in our country. And this Nai Talim says the same thing basically, through production basically, through creativity, through doing something activity. In Nai Talim school, when you visit the Varda, you will find out that school is right now, all the students are cleaning their classrooms, weaving their clothes, doing some agriculture activity. Even they are cleaning their, you can say, toilets and all these things. They are doing the prayers also. They are cooking their foods also. And there is only two, you can say, class 4 employees or the self-support staff, you can say. So that is the pyramid device. When you say the rural and the urban, we are supposed to see in that way. We are supposed to change the pedagogy. In you can say the city area, the private school where the fees are paid by the parents, they want to become the, you can say, some jobs and all this thing. But that has already been changed now. That has been changed from the productivity side instead of doing something in the another way. सर ने एक और चीज बड़ी बात कही और सर ने सुभाष सर ने भी डॉक्टर सुभाष सर ने भी कहा अप्लाइड लर्निंग एंड एडेप्टिव असेसमेंट. एडेप्टिव लर्निंग एंड एडेप्टिव असेसमेंट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट. आप भी यही चीज कह रहे थे, जननी है, उत्साह होना चाहिए. I think in the village area or the school in the government sector, in Delhi, I can say all the government schools are doing very, very, very well. You can say we have the three structure. The government has to take the initiative for that. First of all, government has to take the initiative for how they can improve the learning process, not the building or infrastructure process, how they can improve the learning process from rote learning to the self-learning mode automatically. That will not harm to anyone. There will be no difference between the private school or the public school. Yes, sir, Mishra sir, very well said. And it is quite evident. Somebody has written in chat box. I saw that Mr. Sharma, this is your invention, that curiosity is father of invention. We never heard. Yeah, you consider it my invention, but yes, curiosity and necessity both are important. And here is one statement from Madhumita Nag. Yes, it's important to have change, and we have to evolve better and improvised approach. So from here, I'm taking a question to Deepa ma'am, that in present circumstances, we need to change. And the only thing is permanent in this world is change. Otherwise, nothing is permanent. So my question is, what to unlearn and what to relearn for the futuristic education, especially for teachers and principals? Namaste to all of you. And as you said, the salute to the father and mother of CEIR too, because inquisitives and the necessity was the thing which we came out to the online platform years back. 1 year back, and offline we were there. But we are so happy as one of the board of directors that we are here in this wonderful ceremony of 1 year. Thanks to everybody on this occasion. And as I'll go to my answer, unlearning itself is a learning to think, behave, or perceive differently, when there are already beliefs, behaviors, or assumptions in place. So I feel, in education, we always talk on the focus of about what new skills or competencies we learn today. But I believe that as much value there is in relearning and unlearning also. Because, preparing students of tomorrow requires challenging past assumptions and whatever we have conventions, and about how we are going to live and learn. There was usually a disruptive tendency happening in society, like as we all know, that climate change, automation, artificial intelligence, all are there, but they will potentially dramatically reshaping our workplace as we are now, both in terms of displacing people from jobs, or as well as opening up new way of doing things and new opportunities to thrive to this new environment. We are going to and able to confront some of the challenges and seize the opportunity of them. So education, of course, will play a central role in this, because there are many things that which we have to learn and unlearn also. But we should challenge some of our assumptions along the way about the way we live,
we work, the way we interact with each other, and also that could potentially involve us into unlearning certain habits and even the state of mind. I think, we have to lean ourselves also down, not physically and mentally where we are. I think, we take for granted that we have kind of, for example, which I put across, a cheap energy that comes from hydrocarbons, and we don't really think that too much of how we use that energy. And we want, when we make too much of use, we want bigger rooms or bigger cars. We have to throw away, or we are going for a throwaway economy. So what we want always is that all these things are causing pollution, that we have to understand, that we have to relearn, and we have to unlearn that, and then we have to try out that elimination which can happen to pollution. So, that will disrupt our civilization. So unlearning such habits should happen in our education system and in our thought process. So, and that there is where what the teachers and the role of peopleized education are very important. Our expectations, and we need to challenge some of these assumptions and learn to be bigger, smarter. I think I love to advocate the rediscovery of the joy. Suppose, for example, some of the things which we have to learn once again is that even though we come to the e-books now, we talk about e-books, but we lose the charm of joy of learning. Reading our books just for the pleasure, because we don't understand that when we read our books, what happens is that it's not only pleasure, but when we took so much on time on reading the books, even though we are, when we read about the books in the e-books, we are reading, but when we read otherwise, what happens? Actually, the brain is rewiring and the deep thoughts go inside, concepts and ideas come to us, but we are losing that also in the new way. So we have to think from that out, actually, that very correct, Deepa ma'am. Very correct. You have said very correct thing to read. So that the is books where relearning and unlearning should happen. Correct, some of the concepts we have to take it as a challenge and relearn, and some of the things which we are having, we have to relearn again also. That Thank is you, where Deepa, these new technologies have to take out. Thank you. So I will read from chat. Very interesting. Aradhana Rana ma'am is saying that more than schools, teachers training institutes have to be motivated, where teachers are trained to be innovative. CBSE asked for B.Ed as a, and then what is happening? It is becoming a rat race to have many certificates. But sometimes these are not very fruitful. I want to know about this is CEIR, the kind of, I can tell on the behalf of the board over here that all past experience of those webinars and those trainings had been amazing, and in future also we will be bringing the best from the education field, not to give you certificate only, but to give you a real practical learning. So the interesting thing is this, that now the problem with this is that how and what kind of skills. Anurag ji told many things about that, but there are certain kind of jobs which are not there at all right now. After 5 years, 80% jobs which will come, these are not existing right now. So Mahajan sir, what are the futuristic jobs and skills you can predict for students to learn for 2030? So very futuristic question I have asked you. Yeah, very good question, sir. And no doubt the CEIR platform is futuristic, and we are dealing with the futuristic aspects. Now come to your question. One futuristic aspect is homeschooling. This homeschooling will not be a threat to the existing system of the schooling. Rather than it will enhance the importance of the schooling, because at homeschooling they will do project-based learning, they will do research-based learning, and the school become this knowledge hub for them. School becomes center for the experiential learning. School becomes center for the mastery learning. So first thing is that. Second thing is taking into consideration the jobs. Yes, we have to think about those technologies which are yet to be invented. We have to answer those questions which are yet to be asked. We have to think about those issues which are yet to be raised. For that, what is required? Hyper personalized learning process. Adaptive learning is all right,
but hyper personalized learning process. By the pace and speed of a child, the learning should happen. What the child wants to learn, how the child want to learn, when the child want to learn, where the child want to learn. If that is being adopted in the learning system, the child will ready for the future jobs. Why child will be ready for the future job? With this, the child will be ready to take the risk. Child will be trained for the meta skill and metacognitive skill. The child will be ready for AQ, adversity constant. Whatever the situation is, child will take that challenge, take that risk and do that. Second thing is X factor reality. Now this is a new invention. What is X factor reality? X factor reality deals with AR, augmented reality, VR, virtual reality, 3D printing, artificial intelligence, multiple intelligence, mixed reality. The student should be trained or should be skilled with X factor realities. If they are trained with the schooling system, definitely there will be no job in future. The students will not ready for that. So that is another thing. Next skill they should adopt is experiential learning. The main basic of the experiential learning is allow them to do the blunders. What the role of a teacher? Being a scaffolder, do not allow them to repeat the blunder. When we allow them to do the blunder and not allow them to repeat the blunder, what will happen? They will reach to the root cause of the blunder. What happened? What went wrong? And when they find out what went wrong, they will redo it, they will revise it, they replan it, they redesign it, their design thinking will increase, and finally they reinvent it, and that reinvention will make them future ready for any of the job. Another thing is Internet of Things. Only using the internet is not sufficient. Only using the Zoom classroom is not sufficient. Only using the Google classroom is not sufficient. Internet of Things, they should internalize all those things, how they are applying those aspects, those apps in their daily life, how they are using it, that thing, to solve the problem, to face the problem, to resolve the problem, to raise the question. So that is important. Next thing is independent learner. They should be independently learning. They should take the guidance from the teacher as a scaffolder. Now the role of a teacher is not holding the hand of a child and taking him to the destination. The role of a teacher is go along with the student, scaffold them, show them the way, and they should reach to their destination. And for that, CEIR, under the leadership of Shahjahan sir and all the board of directors, Shri sir, and we all zonal directors are there to guide them what should be the new aspects. Now, whatever the series is coming up, in that we are only discussing about the futuristic aspect. Future classroom, new techniques, 25 new techniques. What is important for the futuristic aspects, and what is important for a child to be future fit to accept any job that is there. Now, if you consider the job, now in 2000 by 2030, 30 billion jobs will be created if the students are ready with the X factor reality, and only 2 million jobs will be scrapped out. This is not my data. This is the data of World Financial Forum. They have given this data 2 days before on the BBC. The forum chairman was discussing that thing. The survey says 3 billion jobs will be created. Where are the students? Where are the curriculum? Where are the syllabi who are training them for the X factor reality? There's augmented reality, virtual reality, independent learning, risk taking, and AQ, adversity constant. There is no barrier of any science, no subject. Every subject is futuristic. Only what we have to bring the change? Design thinking, their thought process, their thinking process. They should be ready to take the risk. If this sort of techniques and this sort of different aspects, if they internalize and if they understand the meta skills, learning about how to learn, applying about how to apply, understanding up to about how to understand, if they are trained for that, future will be there. And I see very bright future for this generation, far better than us. Thank you. Over to Sharma.
Thank you, Pramodji. I have two questions here, very interesting. And this time I will be giving 30 seconds and anyone can answer. So for answering, you can raise hand as soon as I finish the question. So I will ask the question in amalgamation. There is one question from Syed Shaukat Aliji. He is the principal of Idle Indian School. He is asking, okay, you are telling about future, but what to do today? And second thing is from Deepika Nagarwala ji is asking, there are some parents may not have the time, knowledge or the skills to supplement their children learning. What to do with them? It's a good, this question I can answer that yes, parenting, good parenting, this is the job of principal and school also to do good parenting, and sometimes you can get extra help. But his first question, who will answer? So yeah, I can see Mishra ji want to answer the question. What to do today? Definitely, I will say this. I can mention this thing in SODAS. SODA means SODAS. Put the situation. Now the situation is there. Second, O for option. Adopt the option. Whether internet, whether online, Zoom, whatever you want to apply. Disadvantage. Take the whatever the step you take, the options. What is the disadvantage? First, you write down all the disadvantages. Then A, advantages. Adopt all the advantages. And then find out the solution. Because right now, the solution, COVID also, I do not have any solution right now. We are applying the SODAS right now. So for that, we are supposed to use the SODAS right now for solving this problem. Regarding the second part, regarding the parent, I can say ask. Giving the code word ask, A-S-K. Attitude, skill, knowledge. Create the attitude in the parents, create the skill in the child, and build the knowledge for both the things. Over to Pramod sir. Yeah. For that future, only one thing. Today, what today? Just forget about the past and go ahead. That's all. The future will be right. Forget about the future also. We live in present. We don't live in today. Nor we live in. So, Shaukat sir, good question. Now, I have very interesting questions over here. Moreover, sir, when we discuss about the future has already reached. Yes. Yeah, so we are talking about the future. Future has already reached to many schools, many other countries. Yeah, yes. There are three, four people who are asking same question. Ki, sir or ma'am, are our jobs in danger in future? No, not at all. Yes, Subhash sir. Teacher's job is, it can never be a danger, because when IT is trying to dominate, you become the hero by being an inspirer. You will always there in the limelight. Only thing is you change. You have to change according to the situation, and you have to equip yourself with all the skills. And that is why what is called as learning, unlearning, and relearning. Deepaji, good. Subhaji, what do you say? Yes, Sharmaji, schools, what they do, the digital technologies or the humanoids cannot do. For example, nurturing education. What children learn from school because of our teachers' affection, acceptance, and attention, no digital technology can provide so far. So the school's significance is becoming more and more important. As Pramod Mahajan said, what we have to teach them is the skill of metacognition and meta-learning. So we have to make them future ready. About that future, we have absolutely no idea. No idea. So innovation is the key. The schools have to innovate. As Anurag Tripathi said, the methodology and pedagogy has to evolve. Innovation has to happen there. We cannot anymore depend on the old methods of teaching in schools. Schools Subhaji, what you are saying is very good, but let me tell you a very small story in 15 seconds. There was a frog, and he jumped in a pan in which water was boiling. Now this frog has ability to adjust according to the temperature. He started adjusting and he could survive for 2 to 3 minutes. And after that, he was unable to survive and he was unable to jump off. Now, that is the situation of most of the people, whether they are in education field or are they students. So who will answer this question? What to do in this situation? Because we are trying to adjust. We are not trying to jump off and finding another way.
who will answer this question? I want to see the hand raised. Okay, over to Subhash sir again. Sir, your mic, Subhash sir, your mic. Sorry. Subhash sir, unmute please. See, we cannot be adjusting and going on adjusting within what we have at present. So we have to widen our perspective. We have to widen our resources. We have to widen our mind. So that is the way. The schools cannot be perceived as they are today. The schools have to change in our perception. School is not just building. School is a system. So there, the students or the children should take decisions. So are we ready to give them the chance? Because you asked, what is our perception about future education, school education? See, children are becoming smarter than teachers. That's the change that's happening. It's a fact, very correct. Reality. Very so correct, we sir. have to accept ideas from children. We have to ask them what they want to learn. So we are now, what we do is we teach them something which they don't want to learn. They want to learn something which we are not teaching. Yeah. So are we ready for that? So very simple is that every child is telling the teacher, teach me the way I want to learn. Don't teach the way you want to teach. Thank you very much, Archana madam. She said very excellent question. Sir, can I make a small request? Yes, sure, sir. Sir, we have 10 minutes time. Okay, fine, sir. Please, sir. So, not thank you 10 minutes, 600 seconds. Okay. we have to look it from the positive point of view. Yes. So again, there is very interesting question with a small anecdote. So the thing was, there were many frogs, and these frogs were trying to reach to the mountain peak, and then everybody was telling, "Oh my God, we can't go." But one frog reached the top. The secret was that this frog was actually deaf. So now, if you want to do something important and something interesting, do you want to be deaf and try to do something special, something interesting? Yeah, Bindhu ma'am. Yeah, see, that is what, when you really want to become a creative and critical person with all the 21st century skills, you should not listen to others. Teachers must be ready to go for the change. So if they are going for the change, for equipping our children for the future, what will happen? We'll be facing many criticisms. So as like frogs, we should be deaf. So only the deaf frogs can reach to the zenith. So this is my earnest request and plea to all the educators here. So we should make the change. We are the change setters. So it is in our hands how to make this future pleasant and livable for our next generation. So for that, how can the learning happen in the classroom effectively in this online era, in using the digitalized classroom simulations, artificial intelligence, everything, augmented reality? How can we interact? How can we make the children interactive and encouraging and very much productive for the yes. Thank you, Bindhu ma'am. Now I can see there are many principals in the attendees, so I'm asking them one question. What is one thing you will start tomorrow? After listening so many things, what will be one thing you will start tomorrow? So my next question, yes, try to create curiosity. Try to create curiosity. I believe because curiosity is the father. Without father, nothing can be happen. Sir, so my question was curiosity only. Now they will be curious to know what is that we would like to do. So next question is again something interesting, that here we deal with the situation. Somebody said that we, like Pramod sir is talking about design thinking, and Bindhu ma'am also said something about design thinking. I, being the design thinking expert, I know everybody said that think out of the box. Now, first problem is that everybody will think that he's in the box, and then he would like to come out of the box. So what you want to say to all the attendees in this situation, that present situation and future means there is no box.
how to relate it to the education, to implement or to innovate something new. Yes, Mahajan sir. Yeah, first we have to throw out that box, number one. If you have to be a design thinker, throw out that box. Number two, be inclusive, but that Hindi one proverb is there, ekla chalo re. So be all alone when you have to do something creative and something innovative. Listen to everyone, get the ideas from everyone, but you are the one who can make that change. So you have to be creative, and creative are too much introvert. Innovatives are too much introvert. So they have to follow that techniques, that ekla chalo re. They have to be Got tough and your dim. point. Got They your have to point. be tough and dim every time when Yeah, other, Shahjahan sir, particularly with negativity. शाहजहां सर कहना चाहते हैं कि ये कहना चाहते हैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल। सर आगे शाहजहां सर। हम अकेले चलते गए, कारवा बनता रहा। अरे ये तो शाहजहां सर को बोलने देते हैं। I join with the words of Mahajan sir. That's Yeah. an excellent way. And you have to go behind that. You have to take a decision. Should be on top. Sir, others will follow. Realizing the situation. हाँ, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, कारवा लोग जुड़ते गए और कारवा बनता गया. That is it. So you should be part of that. And there is one more interesting comment from Sunita Vijay. Definitely going to change the pattern of teaching, going with creativity and with assessment pattern to 360-degree assessment. Now everybody talks about this 360-degree. We try to implement 360-degree in school. Management try to put 360-degree on principal. Now, how this 360 will reach to students? Who will answer? Yes, Mishra ji. 360 means to cover that all. That's the meaning. That the bomb was exploded only this morning. The idea So of now, the 360-degree came only this morning. Correct, sir. So, but in online, how will we reach to that 360-degree? No. Yes, That Mishra will ji. Sir, unmute. Mishra ji, unmute. For 360-degree, first of all, we are supposed to change our pedagogy. We are supposed to apply 5 E's. And what are that 5 E's? First of all, that is engage, explore, explain, elaborate, and evaluate. So when you are doing this 5E, automatically you can improve your pedagogy. Second part is that you had thinking how you can change these things. Pedagogical, when you improve the pedagogical skills, automatically it convert. Then we are supposed to do the multiple intelligence tests, sir. Multiple intelligence test is one of the important part. Without multiple intelligence test in all the part of the curriculum, all the part of your assessment, you cannot do any type of assessment. Your assessment cannot be successful, you can say. So multiple intelligence sector, in that we are always trying for only 5 to 6. There are 19 points for the assessment. And for that 19 points, we are supposed to follow these things. Automatically that will be 360. And what is that 19 points? Music with music, you can say, with sports, sports with maths, maths with language, language with, I'm giving some example like this. So when you are integrating the subject with the IT, with the sports, with the art, music, culture, drama, theater, automatically this 360 will be covered. Yes, that holistic development you are talking. So Meenakshi ji wants to know about various activities for online teaching. Ma'am, it is a very big list, so better you join the first training session. I will be telling you more than 30 activities which you can conduct online. And now it's this being the last question, so I will give chance to 2-3 people, and especially this time I would like that ladies should come up, because gents are trying to grab every opportunity. So including yourself. No, I have been given this opportunity to give a proper equitable equitable chair. So the question is basically depending on one particular aspect, that there were 4 blind people, and they were trying to describe an elephant. So these 4 blind people were trying to describe the elephant, and this was not possible to describe because everybody was describing in a different way. One was saying it is who was near the trunk was telling something who was at the tail, he was telling that it's like a rope. Somebody was telling it's like a pillar. So here comes the most important thing is collaboration. Now, how can, when all 4 got together, they could describe elephant very nicely.
So there are few questions and few problems which cannot be described alone. Mahajan sir, so which cannot be described alone. So collaboration is very Sharma sir, important. you have picked up a very difficult question to the ladies department. No, I will give chance to ladies first. This question is for ladies, don't worry. So I think Shishan sir, ye wala hataiega. I can't see all the panel members. Sir. Yeah, now the time has come, sir. So Pallavi ma'am, over to you. Yeah, after Pallavi ma'am, we will go for auto thanks. Am I right, sir? One more answer, sir. After Pallavi ma'am, Bindhu ma'am will speak. Okay. Yeah, sir, I think personally, if collaboration is very important and the need of the hour, like you said, one single person, in fact, even Anurag ji, in fact, today all the hour questions are answered by his talk. Collaboration is the need of the hour. We need to, you cannot get ahead alone. One child, when I consider it in the context of a school, one child cannot be doing everything. We need to teach them to be together, and that is the need of the hour. So I feel collaboration should become a very important pedagogical tool that we are using, a value that needs to be given to all our students, and even we need to actually practice it ourselves in our lives, where we need to collaborate together. This is how we teach children through example. I won't take too long. I know we are running short on time. Thank you, ma'am. So it was very nice. So somewhere in education, it is important, ekla chalo re, and sometimes it is important that instead of I, we should be we. So illness will become happiness, or illness will become wellness. If you replace I to W, we. So yes, Bindhu ma'am. Your answer is the last. I echoed with Pallavi ma'am. She said that collaboration is needed. So along with that, for solving a problem, we have to develop this critical thinking and creative thinking. So by developing critical thinking in the classroom, the child will be able to analyze the situations, the pros and cons, evaluate and take a decision based upon the choices. And by developing creativity in the classroom, the child will be able to get a lot of options, how to look at a problem. So these are the three important areas we have to develop, we have to look into in the classroom: critical thinking, creativity, and as team, they must be able to get a lot of opportunities when they are doing problem-based learnings. So this is how they can look into problems when they see. Thank you, ma'am. Thank you, Bindhu ma'am. So my gratitude to all the panel members for a wonderful, lively session. It was amazing to listen all of you, and I'm receiving so many beautiful comments from the participants, and they are all telling it's a wonderful session. It was great session. Still, there are some questions which are coming, but I'm quite sure when they will join our other webinars, they will find answers to many more questions. So over to Shishan sir for further proceedings. Yeah. Ma'am, I now invite to conclude our anniversary edition by inviting Vamsipriya ma'am. She's the zonal director of Bangalore East. Ma'am, please. Thank you, Shishan sir. And I think that elephant question was really nice, because I think I used this as a teacher long back. And the term inclusive will involve everything. It includes your innovation, your curiosity, your critical thinking, everything, because we used to have it as a blindfolded game, where each child used to be given with a newspaper, and then they used to prepare either a stomach or a trunk or a tail, face, and then come and put it up. And when they put it up, they realized what their skills are. Thank you, everyone, and hearty congratulations to CEIR on their first anniversary. Simplicity is defined as a fact that something is ordinary, traditional, or natural, and not complicated. The most complicated skill is simplicity. Anurag Tripathi ji sir is an embodiment of this important skill. First and foremost, I thank Anurag Tripathi ji sir for the Secretary CBSE for addressing the academicians, educators, students, and on this virtual platform, he made this anniversary celebration a major success. He has reiterated on the learning domains, learning skills, and the life skills. Plan and design and execute was his motto. Sir,
Thank you for insisting important points like experiential, creative, innovative, and unique products. Use the best resources and make the practicals interesting. Division of class time into 20 minutes. Knowledge should end in creativity and innovative ideas should pop up. Thank you, sir, for highlighting that numbers should not again indulge in routine or rote memory and that kind of method and insisting on self-study. Students are reflection of parents and hence involve in major participation and discussions from this particular point of view. Assessment, drift from pen and paper technique to participatory technique. 360-degree assessment is a completeness and the life skills. Success of an educator lies in raising leaders, innovators, and empathetic individuals. Importance on learning and teaching skills by infusing different pedagogical skills can help in implementing curriculum differently. I'm sure the roadmap of moving from routine to experiential is well accepted by our audience. Thank you, sir, for that valuable notes. Now, I would like to thank Dr. A.P.Sharma, sir, for moderating the session with valuable inputs on examination and conducting the same. Sir, your information and formation of the STEM sentence, curiosity is the father of inventions, is so memorable, and I'm sure we'll put it in practice. So father and mother are never parted. They are together. Thank you, Ms. Manila, who added the necessity is a mother of inventions and also insights on technology and evolving of digitization. Thanking Mr. Shahjahan, threat foreseen, system acceptance with emergence of advanced establishment and highlighting on home learning and work from home. Your insights and especially on merits and demerits have been valued. Thank you, sir. Thanking Mr. Subhash Nair, future learning skills, learning resources may become effective but more expensive. Nurturing emotional skills will accelerate. That was too valuable and we have taken it positively. Thank you, sir. Ms. Pallavi, thanking you for that information and reiteration on CBSE initiatives like Manodarpan, Toy Katan, and CPD programs, which NEP 2020 wants us to be implementing upon. And yes, I thank Ms. Bindhu ma'am for digital intervention. Industrial intervention has made virtual schooling as future. Your story further taken on the frog is truly amazing. Thank you, ma'am. Ms. Mishra, for that paradigm shift. And sir, I must admit your acronyms are always welcomed. Your SODAS is so welcoming, your 5 E's, which we generally practice, and your emphasis on 3 L's, IMT, and adaptive learning taken very positively, sir. Thank you so much for that. Thanking Ms. Deepa Chandran, who have helped in upskilling and skilling ourselves, challenge some of the assumptions and rediscover that joy is her mantra. Thank you, ma'am, for that valuable words. So it reminds me of Lord Buddha. Anything which is consumed in beyond certain limits is a poison. Ati sarvatra varjayet. Thanking Mr. Pramod Mahajan, sir, on those insights on futuristic learning. Hyper-selective learning with W's and experted realities, ARs, AIs, VR, and your insights on them. Experiential learning, allow them to commit those blunders and ours will make them future ready. I am reminded of the latest circular, which was put up yesterday on Environmental Day from CBSE board, which also reflects on the 3 R's, that is reimagine, recreate, and restore. So I think all of us follow this acronym, and thank you so much, sir, especially your insights on metacognition, what to do and how to do, and how you understand, and what is it that you understand, think and rethink were your mantras. Thank you, sir, for that. Finally, leading to an independent learning. Most students aren't exactly sure what they want to do after school. Futuristic has helped me develop the skills,
that I need to work for my future place. Thank you, dear Jatin Kalro, for raising the question on employable skills. And I'm sure you have got your answer from none other than Anurag Tripathi ji, sir. Thank you, dear Samyukta, for that confident question, and hope you have received that note on code and decode concept in every environment is a very important thing, and your coding begins now. The importance of inbuilt skill is where you need to understand and start imagining and build on those skills. Thank you, dear Krishna Ashok, for that $1 million question, how to overcome the learning gaps. And I'm sure you will now invest on self-learning and also motivate your inner self and improve upon that and groom yourself for the better. Also, dear parents, thank you so much for joining us. Teachers, thank you, and for the continuous participation and lovely questions. One of the sweetest gestures that one can show is saying thank you to anyone that he or she may be grateful to. Saying thank you doesn't cost anything, but it surely makes everyone notice your best behavior and helps you to create that great impression. In spite of how small or big the help or favor you have got, expressing your gratitude is always important. And this gratitude is truly to Dr. Shri Gopinath of CEIR, who has made this possible on this platform. Thank you, each and everyone. Thank you once again. Thank you. Thank you, ma'am. We will sing a song together, and the credit goes to the Almighty. Mahajan, sir? Yes. मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है आंधिया तो हर उसका खैर मकदम आती है आंधिया तो हर उसका खैर मकदम आजे ही तो लड़ने खुदा ने तुझे जड़ा है मत खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है खुदा बड़ा है खुदा बड़ा है मैं तब के सोना है और भी निखरता मैं तब के सोना है और भी निखरता पार करके हिमालय कोई चढ़ा है आखिर तुम्हारी एक दिन आएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन खुदा विशाल तरवर बीज जो पड़ा है खुदा से मुश्किलें बड़ी है मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है खुदा बड़ा है मेरा खुदा बड़ा है So, मेरा खुदा बड़ा है. Thank you very much. Thank you. Okay.